Okay. Sorry. So, so this is the workshop. I just have planned to give you idea. So whatever you have learned, if you have idea, if anybody do not have any idea, then they can also get the experience the what is programming and what how to work with the Java and how to develop a simple Java program and what should be the approach for developing the project. Okay, so that thing I am going to discuss here. So you see, as the title I have given that this is Java Essential. Build your first application in just 2 hours, and this is an online workshop. Everybody here joined, and here this is the overview of a workshop. So this the objective is that to learn the fundamentals of that Java and build a working application. Uh, we will going to spend 2 hours of time, and so after completion, I will provide you digital certification of this particular workshop. So here we are going to learn the basics. Not I am going to cover everything within the 2 hours. I am going to give you the basic idea and hands-on coding. We will see that. Then we are going to develop the application, simple application. I just have planned for you. Okay. And first of all, we should know as a student why I should go for learning the Java. Okay, anybody from your side, can you tell me why we are learning Java? Why not other programming language as a starting? Anybody who can give an answer? ତମମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଇପାରିବ ଯୋଉମାନେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନୁହଁ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ so they can give answer in Odia. So feel free in this workshop. Hello. Yes, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହବ ନା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ଏଭ୍ରିବଡି ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ୟୋର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ କାହିଁକି ଜାଭା ଶିଖିବା ଦରକାର anybody who can say what is the purpose of learning programming language so is my voice is audible to you hello yes am I audible so to develop new technology, yes, fine. You can also give the response through the chat. Rudra has written, so to develop new technologies. Yes, Java is also a technology actually. Uh, all right, we are learning the programming language for It developing the offers softwares. development tools. Yes, we Yes, all are nowadays using offers. software. So we are just basically learning programming language to develop software, and we can write proper instructions so that computer can understand, and as per our requirement, computer will respond to us through our instruction. ଯେମିତି କି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମକୁ କହିବି ଲିସନ୍ ଟୁ ମି ତମମାନେ ମତେ ସେଟାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ତମେ ମତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବ ସେମ୍ ୱେ ଆମେ କଣ କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଖିକି ଦବା କାହା ଥ୍ରୁରେ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥ୍ରୁରେ ସେମିତି ଆମେ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତାମାନେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ହେଲ୍ପ ନଉଛି ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଟ୍ ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତମେ ବୁଝୁଛ ତାପରେ ମତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଛ ତାମାନେ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହଉଛି ସେମ୍ ୱେ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग कि आमे गोटे इंस्ट्रक्शन लिखुचे से इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर बुझी पारुची और कंप्यूटर हमको रेस्पॉन्स दोची someone has been Amit has been written one programming language to use so many technologies like web application okay that's all right but your answer should provide give proper clarity okay so see so not ultimately we are learning programming language for what now we are learning programming language for writing instruction okay that through this instruction we can able to communicate with the computer this is the first point second thing
if we can able to prepare the instruction, if we combine the instruction, that instruction will become one program. Okay, then if we combine the program, then that is called software. The ultimate goal of learning programming language is to develop software. All of you clear this? Hello. Yes, sir. Okay, so now, Sir. so I need this response. Okay, actually ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ, ମୁଁ ମତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଅଛି, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ସି ୟୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସି ୟୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥ୍ରୋରୁ वी कैन ଫିଲ୍ दैट वी आर हियर, वी आर लर्निंग टुगेदर. ओके, सो फर्स्ट ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଦରକାର ଅଛି ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମନେକର ତମେ ଡେଲି ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ବନେଇବ, ସେଥିରେ ତମେ ଅଟୋମେଟ୍ କରିପାରିବ। ଡେଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତମେ ଯୋଉ କରୁଛ ତାର ଟ୍ରାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ କୋଉ पर्पज रे तुम बेसी एक्सपेंस करछो, तुम अनवांटेडली कोठी एक्सपेंसेस होची, तो यू कैन ट्रैक इट, यू कैन जनरेट द रिपोर्ट वेरी इजीली, जोटा कि तुम पेन एंड पेपर रे जदी मेंशन करथुओ, ताल दैट माइट बी वेरी डिफिकल्ट। को जगह तुम भूली भी जाइथिबो कि भूल भी करथिबो कैलकुलेशन, वेयर एज इन द सॉफ्टवेयर तब जो विधि बनैथिबो ताल तमरो से टास्क टा इजियर हो जिवो। ओके, तो बेसिकली वी आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग आवर ओन टास्क और लाइफ मोर easier. Nowadays, everybody using Android phone, and Android phone consists of several apps. So you are using apps for doing your all activities. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, that's fine. So like the way there are so many programming languages. So programming language generally categorized into two major type. One is low level programming, another one is high level programming. Low level programming, your machine language and assembly language, they are basically used for system programming, and they are having lot of disadvantage, very few advantage. That's why uh, nowadays developers are not using low level programming directly. We all are using higher level programming language. Okay, since the evolution of computer, there are many high level language has been came into the market and they have already vanished, and some of the programming language are existing nowadays, we are using. In future, maybe some new programming language may come. So out of many programming language present, some of the programming language become so popular since 25 years or 30 years or 40, 50. C, you know, C programming, C++ programming, there is Java programming. These are Python programming. These are all popular programming languages which were developed early 90s. ओके, तो से समय सब डेवलप होता है, एबे भी हमें स्टिल वी आर इन द 2025, देन वी आर आल्सो यूजिंग ऑल दिस programming languages. So one of the popular and very strongest and feature rich programming language is Java. So if a student starts his career by learning the Java, then he will get the chance to learn all the basic technology or basic things related to the every programming language. तामाने जणे जदि जावा भल भाबरे शिखुची, ताले से सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्यूचर रे से शिखि परिबो। काहे कि ना तमे जतले फ्यूचर रे कंपनी जॉइन करिवो, यू कैन नॉट गारंटी दैट यू हैव लर्नड जावा दैट यू कैन ओनली वर्क विथ दैट टेक्नोलॉजी, नो। तो कंपनी रो रिक्वायरमेंट बेसिस रे तुमको ट्रेनिंग भी दिया जिवो, तुमको अलगा टेक्नोलॉजी रे काम करिया को भी दिया जाय पारे। सेतबेले तमे जदि जावा प्रॉपर्ली शिखिथिबो, ताले न्यू टेक्नोलॉजी के कैच करिया पई यू विल फाइंड मोर इजियर। Got my point? But initially, if we are trying to learn the Java, it is heavy course. So students are getting feared कि एते गुड़ा जिनसे किसी की मैं Python सीखी। Nowadays there are a lot of distractions. So, but from my experience, uh, what I have seen, I have gone through the many students. If you are learning the Java, then you will not uh, getting fear to face any new technology to learn anything. This is the first point. Now, our purpose to discuss about related to Java and what mu Java पढ़ोची बोली Java को टेकी कहूनी. Reality is that Java actually feature rich programming language. Okay,
So this is the versatile language used for web. You can use for developing enterprise level application. Some of the example banking site websites ତମେ ଦେଖିଥିବ ତାପରେ ତମର IRCTC completely Java ରେ develop ହେଇଛି ତ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା popular ବଡ଼ ବଡ଼ secure applications ଯୋଉଟା କି web applications and Android initially was used in Java. Now Kotlin it is using तो मोबाइल आप्लिकेशन तो एंड्रॉइड पूर्वर जो आम यूज करते जावा आप्लिकेशन सब यूज होता आगु जो मोबाइल 2007-8 समय जोड़ा यूज होता सैमसंग कंप्लीटली यूज्ड जावा फॉर डेवलपिंग द apps for the mobile. Okay, so this is versatile language. So using Java you can develop console application, you can develop web application, you can develop Windows application, you can develop network application, you can develop protocols, everything. So everything, even you can also develop system programming, okay, using Java. That's why it is called versatile language. And one of the beautiful feature of Java is that it is platform independent. Anybody know what is platform independent? Hello. Yes, sir. Yes, what Yes, is, sir. yes, what Yes, do sir. you mean by Yes, sir. platform independent? के कॉय परिबो? Platform independent Java meaning क्या is a मेरे को platform platform independent as Java program can run on any operating system. Yes. The platform means any hardware and hardware or software on which your program runs. So here we are generally considering platform as the operating system. So how Java can run on any operating system? So initially, whatever source code you are writing through the .java extension. After that, you need to compile that. So after compilation, it generates .class file, which is called bytecode. Yes or no? And the bytecode requires JVM to run. So JVM will take, or JRE, I can say, Java Runtime Environment, where Java JRE is present, your code is going to work there. Got my point? Hello? Yes, sir. Okay, this is Yes, sir. called Java. Is that's why Java is called platform independent. If you might have learned this, let me draw the diagram here. For example, I have one file, let test.java. Test.java. Is it visible what I am writing here? Okay. So this test.java, what I am doing, I am trying to compile. So how can we compile? So Java provides you inbuilt tool that is called Java C, Java compiler. Through the Java C, you are compiling your code. So once it is compiled, what it is generate? Test dot class file. And this class file is called which code? Bytecode. Everybody got it? Yes, sir. Okay. Then once you get this bytecode, let me write here. So we are getting the bytecode dot class file is called bytecode. So what is bytecode? Bytecode is an intermediate code, okay, which directly cannot be run on any operating system. So now this bytecode I want, suppose here is my operating system, let Windows operating system. So in Windows, if I want to run the bytecode, then I need to configure one environment that is called JRE. What do you mean by JRE? JRE stands for Java Runtime Environment. Here also, if you are using Linux operating system or any MacBook, you are using Mac operating system, there also you need to install the JRE so that your Java runtime environment will be available. Once it is available, your test class can be executed here so that Windows can able to understand. Third, within the JRE, there is one of the important tool, one program is available that is called JVM. JVM stands for Java Virtual Machine. So JVM is a program, set of program which is available under the JRE and which is responsible for managing your program. Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that's Yes, why yes, sir. due to the Yes, sir. bytecode, yes, due to the bytecode, your Java program is called platform independence. And there is a slogan. What is the slogan? Write once, run anywhere. This is a Java slogan generally. And why?
another point why we learn the Java, it is in-demand skill, opens up the career opportunity in software development. There are a lot of career opportunities once you learn this skill. Okay, then it is the foundation for advanced programming. So like if you through the Java, if you are able to learn the object oriented programming, it will help you to crack the interview. Because in the interview most of the uh, interviewer will ask you question related to the object oriented. Since Java is pure object oriented programming, so it covers almost all the principles or features of OOPS properly, so that you will be familiar with the OOPS concept. Okay, so nowadays any application you develop, everywhere we are using object-oriented concept. So once you learn the object-oriented concept through the Java, then you can develop program very easily. You can understand any existing project very quickly. Okay, that is the purpose of learning Java. So I hope this one is everybody clear. Yes, sir. Okay, so now let's move to the next slide. So this is the agenda and I'm going to discuss. So introduction to the Java already, we will take some time. The setting of the Java development environment already everybody know how Java means you must have set the environment. I will discuss how to do all these things. Then we are going to learn basics, what are the necessary things of the Java. Then hands-on coding, we will do 3 to 4 exercise, coding exercise. After that, I am going to build a project that is called simple to do app. So my intention is to give you the idea how actually we plan and develop the project. That is my intention. Got my point? Yes, sir. Okay. And then we will conclude our session. So let's see. This is the introduction to the Java. So first, let's come to the history of Java. History of Java means here I am not going to discuss details about the history. So basically, Java was developed in 1995. The first version of Java introduced into the market. Before that 1995, so James Gosling, you can see the photo here. James Gosling and Patrick Norton and his team, and this team is called was called Green Team actually. And this team all are working where in a company, that company name was Sun Microsystem. Sun Microsystem. And they have planned one project, and that project name is Green Project. And the team is called was called Green Team. They have done the research for developing such a kind of programming language which will become the platform independent. Okay, so through their research around 1992, 1995 or 1994, they have took all the team work to develop a new programming language. So initially Java name was given Oak. Later on, due to the Copyright Act, that has been changed to Java. Okay, so in 1995, the first version of Java was released. Then today we are using Java 2023 versions. Okay, there are so many milestones Java has been covered, and in 2009 or 10, uh, Oracle Corporation takeover means purchased the Sun Micro system. Okay, the nowadays Sun Micro system is not there. So Oracle is responsible for maintaining all the versions and everything related to Java. Now I can say Oracle is the owner of Java nowadays. Is it clear, everybody? And if you want to know details about Java, then you can visit the oracle.com site. So in the oracle.com site, there is so many products. So out of these Java product, you can see there you will get all the tools, all the documents, everything from the Oracle site. So this is the brief history related to Java. Everybody clear? And the person who is the father of developing Java, he is the James Gosling. Okay. And the key feature, first thing is that Java is object oriented. All object oriented because we are going to deal with everything through the object here.
Even you are writing main function that should be present within the class. If you have learned C++, in C++, even though C++ is object oriented programming, but we are writing main function outside the class. Yes or no? Yes, sir. Okay. But in Java, every function, whatever you are writing, everything you need to put within the class. Okay. So the class cannot be directly used. We need to instantiate the class. We need to create an object of the class. Then I can use the class members, whatever member I will define within it. So in Java, everything should be done through the object. That's why it is called object-oriented programming, and it implements almost all the concepts of OOPS. Anybody who can tell me what are the concepts, features of OOPS? First feature? Hello? Hmm. Class, Yes, class, then object, object, then hmm, encapsulation, Encapsulation, abstraction, inheritance, yes, data abstraction, then inheritance, inheritance. then polymorphism. Okay, all these features, then message passing, dynamic binding, aggregation, okay, generalization, these are different concepts which belongs to the object-oriented principle, feature. Everything we can implement through the Java. So that's why Java is called pure object-oriented programming. Done. Now, Java is secure. Secure means it is not providing the user external pointer. In C and C++, there is a concept of pointer. So here there is no explicit pointer. That's why it becomes secure, so that no one will access to the memory. So here in C and C++, we can able to directly deal with the memory address. But in Java, we cannot directly deal with the memory address. We cannot manipulate, we cannot do any kind of arithmetic operation through pointer. Java, that's why it is secure. And it is powerful. Robust means it is powerful. Why? It is providing one garbage collector mechanism. That means any unused resources is present within the program, so immediately it will clean up the memory. The garbage collector is runs behind once your program start running. So these are some, and it is multi-threaded. Multi-threaded means at a time you can run multiple program, multiple sub processes. So that is called multi-threaded. That means it will make your task execution more faster. So that these are some features in Java. Apart from that, there are 7 to 8 features more. If you go, then you can able to understand. And now, uh, what kind of real-time application we can develop? We can develop Android application through using Java. We can develop web application using Java. We can develop enterprise application using Java. Everybody clear? Hello. yes, sir. Okay. So now, if we see the Java, actually Java, initially Java 1, it was called. Later on, Java converted into with some more feature. Then it is called Java 2. Okay, and this Java 2 comes with three edition. One is J2 SE, second one is J2 EE, third one is J2 ME. So J2EC is called standard edition. Standard edition. This is ତମମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛ core Java ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତମର enterprise edition ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ advanced Java। ओके, एंड दिस स्टैंड्स फॉर मोबाइल एडिशन। तामाने ए J2SE रे जो जो फीचर्स बा लाइब्रेरी से प्रोवाइड करिछि एटा हमें कोर जावा शिखिया पई हमें यूज करि परिबा। जेतेबेले तमे वेब एप्लीकेशन बनेबो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनेबो, सेतेबेले तुमको सर्वलेट दरकार, जेएसपी दरकार, तार जो लाइब्रेरी स्प्रिंग बूट दरकार, सब किछि लाइब्रेरी तमे कोठु पाइबो? ऑल द टेक्नोलॉजी यू कैन गेट फ्रॉम J2EE।
and the mobile application develop career achi tar libraries you can get all the technology belongs to the mobile app development that you can get in this edition that is called mobile edition তাহলে তোমার তিনটা এডিশন ଅଛି তো প্রথম স্টার্ট হଉଛି কোর জাভা যেটা J2EE তো once it is compulsory every developer need to learn তো এইটা শিখিলা ପରେ ତମେ either এইটা ଶିଖିପାରିବ ଏଇଟା ବି ଶିଖିପାରିବ ଯଦି ଏଇଟାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନା हो ଏଠି ବି ତମେ କୋଡ୍ କରିପାରିବନି କି କାମ କରିପାରିବନି इन फ्यूचर तुम स्प्रिंग बुट जदि प्रोजेक्ट रे डेवलप करिवो कंपनी रे काम करिवो तमर अंटिल एंड अनलेस कोर जावा नॉलेज नाही ताले एटर तुम काम करि परिबो नाही तेनु इंपोर्टेंट वन इज फॉर एनी बिगनर इज J2EE एवरीबॉडी क्लियर Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. so now let's go to the next so this is a small diagram you can see the timeline of Java history. I will share this slide. You can go through this. Okay, I'm not taking the time more here. Now let's come to the setting of your environment. तो तमने जावा शिखिया गले तो फर्स्ट तमे कोन दरकार सेटा मु एबे डिस्कशन करूची देखो तो प्रथमे मोते जावा शिखिया गले तो आज ए डेवलपर मु हेले डेवलपर मु प्रोग्राम डेवलप करबी यस नो तो एप्लीकेशन को को माने डेवलप यूज करंती तो प्रथमे डेवलपर जे डेवलप करे से आगो डेवलप करिवो तापर टेस्ट करिवो तापर से क्लाइंट को दबो तो एठी रहिला किए डेवलपर व प्रोग्रामर एठी रहिला क्लाइंट क्लियर तो मते एबे गोटे एप्लीकेशन बनेयार अछि ए क्लाइंट पाई तो मते जतले बनेबी ताले मते डेवलपमेंट टूल दरकार ना नहीं यस सो Yes, sir. जावा डेवलपमेंट टूल मु कोउतर पाइबी ना जावा मते प्रोवाइड करूची जेडीके प्रोवाइड करूची गोटे किट प्रोवाइड करूची जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट इट स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट ओके ए किट यूज करिकी मो तो ए किट मते मो सिस्टम रे अवेलेबल करिया को पड़िबो तो मु केमती करिवि ना फर्स्ट मु डाउनलोड करिवि जेडीके डाउनलोड करिवि मो सिस्टम रे फॉर विंडोज कला परे मते टूल्स मिली जिवो टूल्स मिली गला परे मु प्रोग्राम डेवलप करि पारि मु अबे तुमको सेटा देखैबि जेडीके केमती डाउनलोड करिया केमती इंस्टॉल करिया आ एटा हमें तो जेडीके संगरे तमर कोन आसुची ता जेआरई भी आसुची जेआरई कोन दरकार ना प्रोग्राम को रन करिकी ताको टेस्ट करिया दरकार डेवलपर विल डू द टू थिंग developer will develop the program then run the program for testing whether it is working or not ତେଣୁ developer को जो दरकार JRE for running JDK for development both of the things will come once you install the JDK is it clear Yes, sir. okay तो क्लाइंट Yes. पाखरे वंस मु प्रोग्राम बा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सारली क्लाइंट मशीन रे जाई कि रन करिवि तो क्लाइंट डू नॉट नीड टू डेवलप द प्रोजेक्ट खाली क्लाइंट मशीन मते रन करियार अछि सेति पे क्लाइंट पाई मु इंस्टॉल करिवि ता सिस्टम रे जेआरई इंस्टॉल करिवि क्लियर दैट्स व्हाई Oracle provides you JDK separately for different operating system, JRE separately for different operating system. So when you need to download JRE from Oracle site, if you want to run the program in the client machine or any machine where only you need to write the run the program so you need JRE. जेडीके केତେବେଳେ ଦରକାର ମତେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡେଭଲପ କରିବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଟ୍ ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ जेआरई ଦରକାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ जेआरई जेडीके डाउनलोड करिवि एंड इंस्टॉल करिवि अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी Yes, sir. Yes, sir. so now we are going to see how to download and install the जेडीके and how to configure the path मु एटा तुमको आगे देखैबी तापरे हमें आसीबा सेकंड स्टेप को सेकंड स्टेप रे वंस मु अवेलेबल करे देली जेडीके मो सिस्टम रे देन मु डायरेक्टली नोटपैड थ्रू रे प्रोग्राम लिखि परिबी as well as नोटपैड रे लिखिवार डिसएडवांटेज अछि सेति पय हमें पॉपुलर आईडीई यूज करिबा आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आई स्टैंड्स फॉर आईएनटी integrated D stands for development E stands for environment
Okay. So, integrated development environment means at a single place, once you install, there are two popular IDE available. One is IntelliJ IDE and another one is Eclipse. IntelliJ IDE, it is paid actually to avail all the features, and it one is open source. It is freely available. So we are going to use the Eclipse. The IntelliJ you can also use. It is up to you. Okay. Then we can create our application. So then we can check this one. So let's do all these three step by step. So here I'm just deep diving to the coding. Just try to see this. Okay, first of all, I'm just opening Google Chrome for downloading JDK. Let me clean this thing. Is my screen is visible to all? Yes, sir. Yes, Visual. sir. Yes, sir. Okay, fine. So now what can I do? I simply write download JDK. So there are many versions. So latest version is 23, JDK 23. So I am not going to use that. The basic ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜାଭା 8 କୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଭା 8 ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛି later on we can install which version you require ତ ଏବେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ JDK 1.8 ସିମ୍ପଲ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଏବେ ଦେଖ ସିଧା ସିଏ ତମକୁ ଓରାକଲ ସାଇଟ୍ କୁ ନେଇଯିବ ସେଇଠି ତମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ you will get the archives ଜାଭା 8 ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଚାଲ you will find ଦେଖ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ପାଇଁ ସେ ତାର ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ସ ତମର ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ लिनक्स ପାଇଁ ମାକ୍ ପାଇଁ ସୋଲାରିସ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ୱିଣ୍ଡୋଜ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ତ ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ତମର 32 ବିଟ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା 64 nowadays most of the systems are 64 bit ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ exe ଫାଇଲଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ତ ଲେଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଇଟ୍ so here you need to receive the Tom, then you start downloading. It is asking you to do the login. Okay, so this is a problem. If you have account, then you can do this. Let me check. I forgot my account. It is telling. Okay, successfully I have logged into my account. Already I have opened this account. If you have not opened, then you can open this account. Now you can see now the JDK is trying to download. It is around 212 MB of size. ठीक अछि ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏତି clear ନା ନାହିଁ so you can write these steps if you have not done this process otherwise you can ignore it so here the JDK successfully downloaded then what can I do I simply click on it double click on it then you just start click on yes so it will take time to install. So it is telling that the software has already been installed on your computer. Would you like to reinstall? So for the timing, I am just writing yes. Okay, no issue. But if you have already installed, it is not required. तो मु तुमको beginning रू देखेई बोली चाहूँची तो सेति पे मु एटी install कर ली. Okay. So now you can see it is asking the different steps to follow. So you just click install.
Okay, that's done. It is successfully installed. Then you just click close. Then what can I do? I'm going to the let's see, C drive. In the C drive, there is program files. In the program files, you will find a folder that is called Java. If this folder is present, then you will assume that your JDK has been successfully installed. And if you open the Java, then you can see you are getting two things. Already I have told that there is JDK and JRE. Both will be available once you install the JDK. Up to this clear, everybody? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. If I will open the JDK, you are finding so many files, libraries are there, and there is one folder that is called bin. If you expand it, here you will get all the necessary development tools. Tools means these are all small programs provided by the Java. Okay. So here you can see there are different development tools. So one of the tool compiler I need. So compiler is present or not, you can see Java C is present or not. You simple write Java C. So here Java C, yes or no? For running the Java, there is a Java. For generating the jar file, so there is a tool that is called jar. For running the applet, there is applet viewer. To know the disassembler means within a class, what are the members are available. If you want to see, then there is a tool that is called Java P and Java H. So there are so many different tools. For debugging, you can use JDB. There are so many different tools available which will help to the developer for doing the work. Is it clear, everybody? For generating doc from your Java, there is a tool that is called Java doc. And all these tools I can use for my own Java program development. And I will show you some of the tools usage. Now up to this everybody clear? Let's तो एबे मोर काम कौन ए टूल जो अच्छी बिन भितरे ए टूल को मु सबु मोर जेते फोल्डर अच्छी ड्राइव अच्छी सब जगह अवेलेबल करेबी भलो ना नहीं ना मु सब ए पाथ को आसीबी टूल को एग्जीक्यूट करेबी मोर काम कौन आई नीड टू अवेलेबल दिस टूल टू अक्रॉस all my system. If I'm going to create my folder, let me create a folder here. I'm writing my Java programs. Okay. तो ए फोल्डर भितर मु मोर जावा कोड लिखिबी तो मु एठी जीबी कमांड प्रॉम्प्ट जाय कि एठी मु जावा को रन करिया को चाहिबी तो मते दरकार एठी मते टूल को टूल कंपाइल करिया को मते जावा सी दरकार मते एठी जावा सी मिली जिबा दरकार बुझियला तो एनी टूल लेट मु जावा पी यूज करी मु एठी मते मिली जिबा दरकार तो एटा मिलिबा पई मते कोन करिया को पड़िबो तो मते एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करिया पड़िबो तो एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई नीड टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल ना मते all the tools need to be available everywhere in my system. Okay. So एबे आमे से जिनस करिवा कोन करिवा ना आमे जिबा प्रोग्राम फाइल्स भितर को आमे जिबा एठी तमरो कोड गला जावा फोल्डर जावा भितर जेडीके भितर बिन एठी जो पाथ अछि एटा को मु कॉपी कला परे मु कोन करबी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करबी सिंपल लेट्स क्लोज दिस वन नाउ एठी तमे सर्च करो environ edit environment variable system environment variable ए भलिया विंडो आसी जीवो एठी तमे क्लिक करिवो environment variable and here you will get a path देखि परछो समझते Yes, sir. तो एठी तमे Yes, जीवो एडिट sir. करिवो तो एडिट करिकी तमे देखिवो ऑलरेडी मोर पाथ अछि ओके दिस बिन इज प्रेजेंट मु एठी डिलीट कर दोची मु आउथरे नुवा क्रिएट करबी तो मु एठी जोटा कॉपी करथिली एठी पेस्ट करदेबी तो मोर एटा एबे आसीगला परे मु ओके क्लिक करबी एंड ओके क्लिक करबी जेतलो ओके क्लिक कली मोर एबे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हे गला ता अर्थ कोन मते जावा डेवलपमेंट रो जति की टूल सब जगह अवेलेबल हे गला तो मु चेक करबी केमती ना मु cmd कमांड प्रॉम्प्ट एबे खोलुची cmd टाइप कले कमांड प्रॉम्प्ट खोलिबो तो देखो मु एबे कोठी अछि सी ड्राइव भीतर यूजर्स भीतर पीसी भीतर अछि तो मु एठी जति लिखिबी जावा सी यू विल गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स
तो तुमने जानी परिबो तामाने तमर जावा इंस्टॉल अछि और आई कैन राइट जावा हाइपेन version. So here it is telling me that which version of java has been installed in my system. Is it clear? जदि मु सेही एनवायरनमेंट वेरिएबल काटी देबी एटी देखियो कमांड प्रॉम्प्ट रे सेटा आसीबनी से कहबो जे जावा सी इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड. तो लेट मी डू दैट आल्सो. मु एटी एनवायरनमेंट वेरिएबल को गली एनवायरनमेंट वेरिएबल गली पाथ को गली एडिट कली तो एटी जोडा अछि मु एटा को डिलीट कर दोछि. तो एबे मोर एनवायरनमेंट वेरिएबल नाही किछि जदि नाही ताले कोन हबो एबे मो कमांड प्रॉम्प्ट खोलुछि. ओके ठीक अछि. तो एटी एबे लिखबी जावा सी. सो एबे कोन लिखला सी जावा वर्जन भी लिखबी जावा हाइपेन वर्जन. सो এটা কাই আসলে এটা যে কথা নো এনিওয়ে তো এটি জাভা সি ইজ নট ইন্টরনাল এন্ড এক্সটর্নাল কমান্ড এটা লিখুছি তা মানে মোর পাথ মু यूज करि परिबिनी जावा टूल को. तो सेटा को यूज करिया कहले आई नीड टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल. अगेन लेट्स डू द सेम प्रोसेस. You go to the C drive, you just open the program file, go to this JDK, then bin, then copy the path. I am repeating the step, you just follow this step. तो कॉपी हे गला कॉपी ହେଲା ପରେ then what I will do, I will go to the environment variable. In the environment variable, so let's click on the path, click on the edit, and here click new, paste this one, then you click OK, and OK, that's fine. Then again you open the command prompt. Now let's check the java c is working now. Yes, it is now working. That means your java tools has environment variable has been set properly. If I will go to the D drive, तो मु D drive को एमती जाई परिबी एठी भी जदि लिखिबी जावा सी मु पाई परिबी. तो एबे मु जो फोल्डर को मु एबे मोर माई जावा प्रोग्राम्स फोल्डर भीतर को जीबी सेठी भी जावा सी लिखिबी मु पाई परिबी. ता माने मु एनीवेयर आई कैन अवेल माय टूल जावा टूल्स. तो एति की बुझी पालो समस्ते ए पर्यंत फर्स्ट स्टेप. ओके Yes, sir. Yes, sir. okay Sir. next Yes, sir. let me do a simple program using notepad. तापरे हमें आईडी को जिबा. तो मु एबे कोन करबी मु एबे लेट्स सी मोर जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करथिली ठीक अछि मु एट को जाउछि मो डी ड्राइव को गली मोर my java programs I have created. Yes, this inside it I want to open it inside the command prompt. मु जस्ट सेटा को सिलेक्ट करी cmd मारली एटी सेही पाथ रे आसी गला. एटी कोन करबी नोटपैड लेट गोटे प्रोग्राम मु क्रिएट करछि test.java. सो एटी मु गोटे प्रोग्राम क्रिएट कली. तो एटी मु जावा प्रोग्राम लिखिबी. तो नॉर्मल जावा प्रोग्राम आमे केमति लिखिबा ना फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ए क्लास. एवरीथिंग आई नीड टू पुट विद इन द क्लास. ओके तो क्लास भितरे मोर मेन फंक्शन रहइबो. मेन फंक्शन आमे एमति लिखुछे पब्लिक स्टैटिक void main आउ ये तमर गोटे आर्गुमेंट कंपलसरी रिसीव करूची. यू मे पास यू मे नॉट बट यू हैव टू राइट दिस स्ट्रिंग array of args. ता भितरे एबे हमें सिंपल गोटे आउटपुट मेसेज दवा वेलकम टू जावा. ओके और हेलो वर्ल्ड व्हाट एवर मे बी. हियर आई एम जस्ट राइटिंग हेलो जावा वर्ल्ड. ओके डन. तो लेट्स सेव इट. ओके तो मु एटा सेव कली. सेव कला परे मु एठी के आसीबी. तो मु एबे ड्राइव रे जाई कि देखि मोर क्रिएट हेइछि कि नै. तो test.java फाइल क्रिएट हेइछि ना नै सोर्स फाइल हैज बीन क्रिएटेड. नाउ व्हाट कैन आई डू since it is high level programming I need to compile it. I can compile through the java c compiler. So here I will write test.java. So once I enter, so if there is no error it will successfully execute. So if you go and see the another new file has been generated that is called class file. Is it clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. And this class file is called bytecode. एटा को हमें कहबा bytecode. बर्तमान से bytecode को मु रन करि परिबी. केमति रन करिवि ना आ गोटे टूल यूज करिवि जावा एटी लिखिबि टेस्ट. तो देखो आसी गला हेलो जावा डन.
So this is the way we can develop the application. But real time रे तमरो बहुत सारा फाइल क्रिएट करिवो बहुत तो बारंबार तमे कोन एठी जाइकी देखुथबो पुणी एठी कंपाइल करथबो भूल हेले पुणी सोर्स कोड ओपन करिकी ताकू एडिट करथबो. इट इज ए प्रॉब्लम और नॉट? Yes, sir. इट इज अ मैनुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग. तो एटा न करिकी आम बेटर कौन करिवा ना गोटे जगार प्रोग्राम लिखिबा एरर थले सेठी सॉल्व करिवा हमर फाइल सेडा को सेठी मेंटेन करिवा आउटपुट सेठी देखिवा. सेति पई आमे यूज करछु आईडीई. आ जेतल दरकार डिबग करके भी देखि परिवा जे स्टेप बाय स्टेप मोर प्रोग्राम केमती काम करूची. तो सेटा को कहबा आईडीई. तो एबे आमे आईडीई इंस्टॉल करिवा. तो मु ऑलरेडी इंस्टॉल कर सारची तुमको खाली मो स्टेप बतै देबी तमे इंस्टॉल करिवो. तो एबे को आईडी इंस्टॉल करिवा ना एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करिवा. तो लेट्स ओपन द क्रोम again. So I am opening the Chrome, Google Chrome. Okay. So here you try to download Eclipse IDE, Eclipse for Java. Okay. So if you click, this is the eclipse.org, and here you will get the set of files for downloading. Okay. Which one you need? If your operating system is Windows, then you can download from here. If it is Mac, then you can download this one. So you just click here to download. So now it started downloading. So once it is downloaded, then you can install it. Okay. So already I have installed. So I am not going to install it here. तो तमने पाखरे भी install करिचो कि Eclipse तमने? No, sir. No, sir. Okay, जदि करनो ताले you download and you try to install it in your system. Okay, ए manual approach आमे use करिवानी, आमे Eclipse use करिवा. तो Eclipse use करले once तमरो system रे successfully install हे गला, then what can you do? You can simple open the Eclipse. So I have already installed this one. So I am just trying to open. So open कला बेले कि से पचारिबो जे तमरो workspace को फोल्डर रे तमरो जावा कोड सब रखिबो. तो मु एबे एमती गोटे फोल्डर अछि सेठी रखिया को चाहूची किंबा आई कैन चेंज. लेट मी चेंज. तो मु एबे कोन करूची ना डी ड्राइव रे जाउची. मोर वर्कशॉप एबे तयारी करची कोटा माय जावा प्रोग्राम्स. यस और नो? हेलो. Yes, sir. So I am just Yes, selecting this sir. one, then selecting. So it will be my working space where I am going to store my all Java project whatever I am going to create. तो एटी मु सिंपल लिखबी launch. तो लॉन्च लिखला माने से कौन करिवो मोर Eclipse open करिवो. तो it will take little bit of time to open. Now you can see your Eclipse has been opened like this way. Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay. Once it is open, then what can I do? I can close this one. So here you will get these different windows. এটা হলা তোমার ওয়ার্কিং স্পেস, এপଟେ তোমার ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର, ଏଠି ତମେ ଆଉଟପୁଟ ଦେଖିବ. ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ରନ୍ କରିକି ଦେଖିବା. ଦେଖ କେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବୁ. ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କରିବ ଫାଇଲ, ଦେନ୍ ୟୁ ଗो ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁ, ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଦ ଜାଭା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ. ऑलरेडी तुम जेडीके इंस्टॉल अच्छी ये ऑटोमेटिकली नहीं जीवो, किसी प्रॉब्लम नहीं. एंड एटी प्रोजेक्ट नेम दे परिवो. मु लिखली माई फर्स्ट आप. ओके, प्रोजेक्ट नाम एटा देली. यू कैन राइट इट इन कैपिटल और यू कैन राइट इन स्मॉल. माई फर्स्ट आप. तो देन क्लिक फिनिश डायरेक्टली. सो नाउ इट हैज बीन क्रिएटेड. तुम प्रोजेक्ट पैकेज एक्सप्लोर रे देखि परिवो तुमरो क्रिएट हे गला. बट या भितर एबे किछि नाही. तापरे तुम एबे कोन करिवो, राइट क्लिक करिवो, न्यू करिवो, एटी क्लास ऐड करिवो. तो लेट्स add a class that is called test. Okay. एटी देसी पचारुची तमे सेही क्लास भितर मेन फंक्शन ऐड करिया को चाहूचो कि यस मु ऐड करिया को चाहूची. फिनिश करिवि. तो तुम देखिवो एबे तमरो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को बळिया गेला ना. एसआरसी गोटे फोल्डर क्रिएट हबो. ता भितर तमे एटी तमरो पैकेज क्रिएट हला. ता भितर तमरो जावा फाइल रहिला. तो एबे हमें फोकस करिया जावा फाइल जोटी क्रिएट हला. तो एटी तमरो कोड आसी गला. एटी तमे लिखिबो तमरो कोड. तो एटी देखो आईडी तुमको प्रोवाइड करूची गोटे इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कौन ना तुमको से सजेशन दे दोची. तुम देखो सिस्टम लेखिकी डॉट मारिवो, ये सजेशन दे देला. कौन ना सिस्टम डॉट
आमे कौन यूज करछे आउट आसीगला आउट पर डॉट मारिबो से सजेशन देबो जे को फंक्शन यूज करिवो सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस विद इन द आउट प्रिंट अछि प्रिंट एलएन अछि आमे कोटा यूज करिया प्रिंट एलएन यूज करिया प्रिंट एलएन रो भी बहुत सारा ओवरलोडेड मेथड्स अछि आमे कोटा यूज करिया जोटा गोटे आमे यूज करिया तो एटी मु लेखिली वेलकम टू जावा इज इट क्लियर अरे समस्त एंजॉय करछो एती बुझी परछो ना यू आर फीलिंग ऑल बोर सर एन्जॉय करूँ ओके सो एबे आमे कोन करिबा एटी लेखिले एबे एको रन करिया तो यार शॉर्टकट की अछि मु एबे शॉर्टकट यूज करूनी मु एटी डायरेक्टली राइट क्लिक कली एई जो प्रोग्राम ऊपरे एटी कोन कली रन एज जावा एप्लीकेशन करूची तो माने देखि परिबो तो वेलकम टू जावा वर्ल्ड ता माने मु कोन कली मु जदि एटी माने कर सेमीकोलन मिस कर देली तो ताले इमीडिएटली एटी तमे एरर पाइबो डेवलप कला बेलको एरर पाइबो सेही अप्रोच रे कोन ना आग एरर पाउचो तापर जाई के तमे कोन करछो पुणी जाउछो सोर्स कोड को अपडेट करके पुणी कंपाइल करके पुणी रन करछो एटी आ कंपाइल करिया स्टेप तुम दरकार नहीं इट विल ऑटोमेटिकली कंपाइल वंस यू रन द एप्लीकेशन इज इट क्लियर Yes, sir. नॉट रन द एप्लीकेशन Yes, वंस sir. यू राइट द कोड तो एटी देखो एटी संग संग एरर देखेला एबे भी तुम यदि ट्राई करियो रन करिया तुम एठी भी रन करियो रन टेस्ट तो देखो ओके प्रोसीड से एबे तुमको एरर टा भी एठी देखै दउची जोटा कि तुम कमांड प्रॉम्प्ट रे भी पाउथलो एरर इज इट क्लियर तो आमे रन काई करिया जिबा एठी तो एरर देउची माने एठी करेक्ट करिया करेक्ट करी कि तापर तुम रन कर परियो से पचरची सेव करिया को चाहूचो कि ये सेव करो तब रन करो वेलकम टू जावा हम पाइले तो एबे आमे ए पर्यंत पहुंची गले जे प्रोजेक्ट केमती क्रिएट करिवा सेटर केमती फाइल रखिबा आ काम करिवा अप टू दिस क्लियर Yes, यस सर sir. so Yes, sir. Yes, sir. step 1 step 2 step 3 we successfully completed okay केतना टाइम है बे 8:34 okay remaining on 1 hour we are going to cover so let's see okay so now you can able to understand this code this is the java you have written then you need to compile it then you will get getting the uh, dot class file then there is jvm which will handle the class within the jvm there is what your interpreter your jat compiler your garbage collector jvm ता भितर सब ए सब जिंस अछि से कोन करछि ना तमरो क्लास फाइल को कोन करूछि नेटिव कोड रे कन्वर्ट करूछि नेटिव कोड माने तमरो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोड टा को बुझी परिबो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट exe फाइल को बुझे तमरो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट आउट फाइल को बुझे तो तारी फॉर्मेट रे कर देबो तापर प्रोग्राम जाई कि कन्वर्ट करिवो पुणी आथरे से बाइनरी कोड रे कन्वर्ट होला पर तम प्रोग्राम पुणी आथरे रन करिया स्टार्ट करिवो सो दिस इज द वे योर जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग इज इट क्लियर Yes, Yes, sir. sir. okay Yes, sir. once we done with this let's discuss some important fundamental of or basics of java तो normally आमे कौन करूचे ना गोटे प्रोग्राम जते लिखुचे तो प्रथमे हमर किछि डेटा सहित डील करूचे देखो प्रोग्राम गोटे प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग तो एनी प्रोग्रामिंग यू आर राइटिंग इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग कौन ना डेटा जहाँ ऊपर हम ऑपरेशन करिवा तापरे इंस्ट्रक्शन जो टाइप रो हमें ऑपरेशन करिवा इज इट क्लियर हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, If sir. there are two important component of any programming that is called data and instruction तो डेटा आमे कौन करिवा ना डेटा टाकू प्रोग्राम रे होल्ड करी रखिवा तो होल्ड करिवा कोठी ना मेमोरी रे मेमोरी कंप्यूटर तो मेमोरी गोटे जगह अछि जोठी कि डाटा को आमे रखि परिया स्टोर करिकी तो मेमोरी को मते रिजर्व करियार अछि तो मो प्रोग्राम थ्रू रे मु एमिति इंस्ट्रक्शन लिखिबी से जाई कि मोर मेमोरी ऑक्युपाई करिवो तो सेही मेमोरी जो ऑक्युपाई करिवो सेति पई मते कोन क्रिएट करिया पड़ियो variables create करिया पड़ियो is it clear what is the purpose of variable now we are creating variable for occupying the memory for storing my data is it clear Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. and in this memory I will write the instruction for doing the operation तो सेति काम पे आमे एक्चुअली वेरिएबल यूज करछे तेणु वेरिएबल इज ए कंटेनर एक्चुअली एटा गोटे कंटेनर और आई कैन से इट इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन within which we are storing our data and we are getting that data okay
and data type means a variable टा को type रो value रखिबो integer value रखिबो ना floating point value रखिबो ना string value रखिबो ना boolean value रखिबो सेटा मते data type थ्रो रे ताकू जणेबार अछि जे तू ए टाइप रो value रखिबो सेति पय हमें data type यूज करछु up to this clear Yes, sir. Yes, sir. ओके तेणु आमेरो वेरिएबल क्रिएट करियार सिंटैक्स कोन ना आमे जदि देखिबा वेरिएबल क्रिएट करियार सिंटैक्स होची वी आर यूजिंग डेटा टाइप ओके then what we are using we are giving the variable name ମୁଁ ଏଠି ତ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ତ ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଭେରିଏବଲ ନେମ୍ ଦବା ପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ରୁଲ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନା ଦେଇଦେଲେ ବି ହବନି ତ ଭେରିଏବଲ ନେମ୍ ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଅପସନାଲ ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଅଫ ଭେରିଏବଲ ସୋ ଲେଟ୍ ମି ଟେକ୍ ଏ वन एग्जांपल डेटा टाइप आमे बहुत सारा डेटा टाइप पढिचे लेट इंटीजर गोटे डेटा टाइप अछि यस और नो सो वेरिएबल नेम आई कैन राइट एक्स वाई जेड एनीथिंग by following the identifier rule then I can assign value so here if I assign the 5 value then it is x can store in the memory so what is happening if you are writing this instruction এইভଳିଆ ইনস্ট্রকশনটা যেତେବେଳେ ରନ୍ ହବ କ'ଣ ହବ ଦୁଇଟା ଅପରେସନ ହବ ପ୍ରଥମେ ସେ ମେମୋରିକୁ ଯିବ ଖୋଜିବ କେତେ ବାଇଟ୍ର ଜାଗା ନା ଇଣ୍ଟିଜର ଡାଟା ଟାଇପ୍ର କେତେ ସାଇଜ ନା 4 ବାଇଟ୍ ୟେସ୍ ଅର୍ नो हेलो 4 बाइट Yes, एंड sir. 4 बाइट जगह नेला परे ता भीतर जाइकी रखिबो 5 को से स्टोर करियो तो कह सर मु केन जानिबि जे इंटीजर साइज 4 बाइट बोली तो जावा प्रोवाइड्स यू द गाइड कि इंटीजर साइज होची 4 बाइट बोली तमे जदि चाहिबो प्रोग्रामिंग थ्रू रे प्रिंट करी चेक करिया पई आई कैन शो यू दैट तो तुम माने देखि परिबो एबे लेट मी शो यू दैट सब डेटा टाइप रो साइज आमे एठी देखि परिबा ए प्रोग्राम रे ही देखै दोची तुमको देखो एठी मु लिखिली so this window is clear to everybody Yes, sir. Yes, sir. system dot out dot println so here we will write our let me write size of int data type okay here what I'm doing so there is a wrapper class integer 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 dot okay you can see there is a size okay so here I'm just concatenating I'm writing this bytes तो देखो मैं एटा को सेव करी रन करी रन आ जावा एप्लीकेशन तो व्हाट इट इज टेलिंग 32 एक्चुअली 32 बिट्स नॉट बाइट्स तो एटा को मैं एटा ऑपरेशन कर दोची तो गोटे बाइट केते बिट 8 बिट 8 bit. 8 बिट तो आमे एबे रन करियो तो देखि परिबो एबे द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इज हाउ मेनी बिट हाउ मेनी बाइट्स 4 बाइट इज इट क्लियर तो लाइक द वे यू कैन चेक अदर डेटा टाइप मन कर मो कहबी द साइज ऑफ float or double data type so here I can write there is wrapper class that is called double you can use it and you can run then you can see the double data type is 2 byte if you want to see the character data type okay so then you can write character like this then you can see 2 byte it is just telling that is it clear everybody Similarly, integer range केते तमे सब देखि परिबो तो एई approach रे so this is the program through which I can check what is the size it will take so now I can create the variable using data type so there are different data types supported by the Java तो data type को जदि हमें divide करिवा दी प्रकार गोटे हला primitive data type primitive और fundamental data type
another one is reference data type. Okay, reference कौन सेटा हमें डिस्कशन करिया. There are 8 primitive data types. कौन data types अछि मु खाली लिस्ट कर दोछि त माने जानिबो. Integer value रखिया कोइले प्रथम data type हैला byte. Okay, second data type हैला short, third data type हैला integer, fourth data type हैला long. So these are all 4 data type which you are going to store integer value. जदि तमे floating point value रखिया को चाहूचो ताले there is a data type that is called float and another data type is there that is called double. If you want to store character type, there is data type character. If you want to store boolean type, there is data type boolean. Is it clear? Hello. So Yes, this, sir. this is the 4, this is the 2, 6, and this is the 1, 1. So total 8 primitive data types are there in Java, using which we are creating the variable and storing the value. Done. तो ए फर्स्ट पॉइंट मु तुमर क्लियर कली. सेकंड एबे हमें चलिबा. तो आमे डेटा टाइप वेरिएबल क्रिएट कले, ता भीतर वैल्यू रखिले, तापरे आपरे ऑपरेशन करिबा. तो देयर आर डिफरेंट वे वी कैन ऑपरेशन. तो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन करते, दीज आर द स्टेटमेंट व्हिच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तुम प्रोग्राम रे तुम मल्टीपल लाइन लिखिच. ओके, तो मु चाहूची जदि एइटी गोटे कंडीशन पकेबी, एई कंडीशन जदि ट्रू हैला ताले ए लाइन एग्जीक्यूट हो, जदि फॉल्स हैला ए लाइन एग्जीक्यूट हो. जदि एटा ट्रू हैला एटा एग्जीक्यूट हबनी. ताले मु कोन करिवि, मोर कंट्रोल टाकू एई कंडीशन बेसिस रे मु एइटी जंप करिवि न नाही एइटी की जंप करिवि. ता माने मते ताले कोन लिखिया पड़िबो ना गोटे कंट्रोल स्ट्रक्चर बा कंट्रोल स्टेटमेंट लिखिया पड़िबो. तो देयर आर कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आमे केमती करि परिया, इफ एल्स थ्रो दे परिया, नॉन स्विच केस थ्रो दे परिया, अदरवाइज आमे लूप्स यूज करि परिया. तो इन जावा देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लूप. कौन कौन पर्टिकुलरली ना, वन इज व्हाइल लूप, second one is for loop, another one is do while loop. Apart from that there is another loop that is called for each loop. चारि प्रकार लूप आमे जावा रे यूज करिबा. Is it clear everybody? Yes, sir. Sir. Okay, okay, fine. So now let's move to the next. So let's do some programming. आमे किछि प्रोग्रामिंग करिबा. प्रोग्रामिंग करी कि आमे फंडामेंटल क्लियर हवा. जो लेट्स सी. तो एई 6टा टास्क अछि, मु एबे वन बाय वन करिवि व्हिच विल कवर एवरी कॉन्सेप्ट. तो देखो एबे तो टाइम ही गला केते 8:45 नाଇଁ कि आमे 9:30 सुधा टिके सारिया कष्ट हबो. रिमेनिंग कोन कोन काम अछि मु कहि दउछि तुमको. एतिक 6टा टास्क करियर अछि, प्रोग्राम करियर अछि, देन हमकु प्रोजेक्ट डेवलप करियर अछि टू डू ऐप टा. तो ठीक अछि. मते टिके टाइम दियो, मु एटा कवर करछि. तो डू यू वांट ब्रेक फॉर 5 मिनिट? समस्त ब्रेक नबा कि 2 मिनिट? हेलो. Yes, sir. ठीक अछि, गोटे काम करछि मु 2 मिनिट रो ब्रेक दउछि तुम मानको. तापरे हमें स्टार्ट करिवा नेक्स्ट सेशन, प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करिया. ठीक अछि. Okay, sir, sure. ओके, जस्ट अ मिनिट, let me put the timer. So please return within 2 minutes. Yes. Hmm? Hmm. 2 minutes. ओके, टिके फ्रेश ही पळेस हम स्टार्ट करिया.
Hello. Yes, sir. Sure. Okay, let's start. Yes, sir. So I'm going to write the program step by step. First task is very simple. Okay. So this is finding the simple interest. तो देखो एथरे each and प्रति problem रे गोटे गोटे concepts implement करी करी चलिवा जावा रो तो सेति पे मु एठी बुझे बुझे चलची समस्त देखो एठी फर्स्ट आमे कोन करिवा ना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करिवा तो एठी गोटे मने रखो दिस इज आवर प्रॉब्लम गिवन टू अस ओके दिस इज द प्रॉब्लम what is find the simple interest. Okay, so let me open the so for this what I will do within this project I can create a file that is called simple interest. So how can you create simple right click on the project, you go to the new and add a class. Okay, here I can write simple interest, then you add the main function here, just click save. So your program has been started here. Okay, so to find the simple interest, first of all you tell me what will be the logic, माने what we should do. तो मु टिके तुमको कहि दउची गोटे प्रॉब्लम जदि तुमको दिया हेतिबो से प्रॉब्लम को तुम केमिति एक्चुअली सॉल्व करिवो. तो मोर प्रॉब्लम टा कोन मते दिया गला ना फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला मते जाना अछि SI इक्वल टू P इनटू T इनटू R डिवाइडेड बाय 100. Divided by 100. इट इज ऑल राइट. तो एबे जो प्रॉब्लम देइछि तार मु सॉल्यूशन फाइंड आउट करिवि. तो थ्रू माय प्रोग्राम आई नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. ऑल राइट. तो हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ना देखो मोर फर्स्ट तीनटा स्टेप मु फॉलो करिवि. एनी प्रॉब्लम तुमको इट मे बी ए स्मॉल प्रॉब्लम, इट मे बी ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप तमरो कोन होबा दरकार ना एनालिसिस करिया दरकार, एनालिसिस करिवो. सेकंड स्टेप रे कोन करिवो ना से तार सॉल्यूशन टाको तमे डिजाइन करिवो. इज इट क्लियर. थर्ड स्टेप रे तमे कोन करिवो ना ताको प्रोग्राम थ्रू रे इंप्लीमेंट करिवो तार सॉल्यूशन को implement. So implementation is always the last part. Always you should take time to understand the problem, analyze the problem properly. तो analysis कला बेलू आम को तीन टा जिनस देखा ना फर्स्ट देखा ए प्रॉब्लम पाई कौन गिवन अच्छी दैट इज कॉल्ड कौन इनपुट अच्छी. ओके, तापरे ए प्रॉब्लम रो डिजायर्ड आउटपुट कौन, क्लाइंट कौन आउटपुट चाहूची, तापरे प्रोसेस करी जे मु कौन कले से आउटपुट पाई परिबी. इज इट क्लियर. Yes, sir. Yes. ओके, तापरे मु डिजाइन करी. डिजाइन करिया मींस कौन ए प्रॉब्लम को सॉल्व करिया को जाई कि मु लिखिबी एल्गोरिदम. मु एल्गोरिदम बनेबी आउट टू बेटर विजुअलाइजेशन पई आई कैन गो फॉर फ्लो चार्ट. तो तुम ये लेख न लेख तुम माइंड रे एल्गोरिदम स्टेप थिबा दरकार. वंस यू डिजाइन द एल्गोरिदम देन यू कैन इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिदम बाय any programming language. You can use C, you can use C++, you can use Java, you can use Python. Any programming language you can use to solve this problem. Got my point? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so let's do the same thing for this problem. तो एनालिसिस कले मते तुम माने कहो इनपुट केतरा नेबी ए प्रॉब्लम पाई कौन कौन नेबी. अरे मत सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कला बेले तुम जानथिबो कौन कौन तुमको देइथिबो इनपुट. Sir, PTR. Yes, Time input पड़ेगा. you need principal amount, you need time, you need. तो यूजर जो Rate, प्रोग्राम तुम चलेबो rate of interest. यूजर को पचारिबो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर टाइम पीरियड, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट. यूजर तीनटा दिन से एंटर करिवो. एंटर कला परे तमे जो प्रोसेस करिवो कोन ना SI इक्वल टू फार्मूला आईटी पकेइबो, फार्मूला पकेइबो. दिस इज द फार्मूला यू रिटेन. तो वंस फार्मूला कैलकुलेशन हो गला पर SI बाहर जीवो. तो SI टाको तुम प्रिंट करके दबो द सिंपल इंटरेस्ट इज दिस. इज इट क्लियर और नॉट.
Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके वंस वी डिजाइन दिस माने एनालिसिस कर सारे तार डिजाइन एल्गोरिथम करबा एल्गोरिथम रे कोन करबा आमे लिखिबा स्टेप 1 रे तो लेट मी राइट द एल्गोरिथम एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम तो फर्स्ट एल्गोरिथम रे स्टेप 1 रे आमे को लिखुचे बिगिन लिखुचे स्टेप 2 रे आमे को लिखुचे इनपुट p कमा t कमा r आमे यूजर को कहूचे नेक्स्ट स्टेप रे आमे यूजर कोन करिवो जो आमे डेवलपर जे प्रोग्राम लिखिवो नेक्स्ट स्टेप रे कोन करिवो कैलकुलेट एसआई रो फॉर्मूला एट लिखुचे यस और नो Yes, sir. ptr 100 एंड स्टेप 4 रे आमे कोन करचे प्रिंट एसआई एंड स्टेप 5 रे एंड द प्रोसेस स्टेप 5 रे आमे एंड करचे दिस इज द algorithm we are writing generally while आफ्टर द एनालिसिस तापरे आमे कोड लिखि आरंभ करिया एटी कोड लिखिवा तो एटा समस्त बुझी पालो तो Yes, sir. Yes, sir. तो एबे एटा मु काई कहूची कि नॉर्मली सब स्टूडेंट कोन करंती प्रॉब्लम दिया है डायरेक्ट प्रोग्राम लिखे स्टार्ट करंती ए दीटा को स्किप कर दियंती सेठी से माने फसी जांती जे मते नेक्स्ट स्टेप रे कोन करियर अछि तो फर्स्ट तमे प्रोग्राम को भलरे एनालिसिस करो सेकंड स्टेप रे तमे एल्गोरिथम माइंड रे बनाओ तमे न लिखिले नाही माइंड रे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाओ जे मते कहा पर कोन करिवार अछि तापर तुम कोडिंग करिया स्टार्ट करो तो एई लाइन पई मु को कोड लिखिबी एई लाइन पई को कोड लिखिबी एई लाइन पई को कोड लिखिबी so that I can able to write the program effectively. So this is the approach everybody should follow. So initially you may find some difficulty, किंतु after solving 10 to 15 problem in this way, देखियो तम confidence level high ही जीवो आ तमे बढ़िया प्रोग्राम लिखि परिबो. Got it? Yes, sir. Yes. ओके तो एबे हमें बिगिन करिया माने हमरो मेन फंक्शन एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन तो एटी एल्गोरिथम रो बिगिन स्टेप हे गेला इठु तापरे आमे कोन करिवा आमे एबे मेमोरी रे केतेटा हां एटी हम प्रोग्राम लिखला बेलको आमे डिसाइड करिवा हाउ मेनी मेमोरी आई नीड टू रिजर्व तो मु मेमोरी रिजर्व करिवि प्रिंसिपल अमाउंट पई मेमोरी रिजर्व करिवि टाइम पई मेमोरी रिजर्व करिवि काइना ए डाटा मते रखिबार अछि रेट ऑफ इंटरेस्ट पई एंड कैलकुलेशन पर एसआई टा को भी रखियार अछि तो मते 4 मेमोरी आई नीड टू रिजर्व इज इट क्लियर एंड Yes, sir. एटी Yes, जो sir. Yes, sir. डाटा सहित डील करिवि सब को नै जाउची फ्लोटिंग पॉइंट डाटा तेतमे डबल देली तो डबल मु फर्स्ट लिखिली प्रिंसिपल अमाउंट आई कैन राइट डायरेक्टली वेरिएबल ना कंप्लीटली दे पारे और सिंपल मु पी भी दे पारे तो लेट्स राइट प्रिंसिपल अमाउंट ओके तो मैं डायरेक्टली गोटे बाय गोटे डिक्लेयर करि परिबो और गोटे लाइन रे सब डिक्लेयर करि परिबो लेट मी डिक्लेयर वन बाय वन तापर गोटे लाइन रे मैं डिक्लेयर करिबा फर्स्ट हला प्रिंसिपल अमाउंट सेकंड इज टाइम पीरियड ओके थर्ड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मते मिल गला आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू I need to store the result. Simple interest. Okay. तो एबे मते कौन करियर अछि यूजर को गोटे लाइन देखैबी स्क्रीन रे जे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट तापर यूजर को अलाउ करबी जे तू एंटर करे जो वैल्यू तू एंटर करियो मु ताकू नेकी मेमोरी रे स्टोर करैबी तो प्रथमे यूजर को जो लाइन टा देखैबी जो यूजर को गोटे आउटपुट देखैबी आउटपुट नॉर्मली हमें लिखू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रो रे ओके तो लेट मी राइट दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सो इट इज हैविंग ए शॉर्टकट आल्सो सिस आउट लिख देले से आसी जीवो तो मु एटी खाली वन बाय वन लिखुची तो एटी यूजर को मु गोटे आउटपुट देखेबी एंटर कौन प्रिंसिपल अमाउंट ओके तो एटा जो लिखिली तो लेट मी रन माय प्रोग्राम एंड चेक व्हाट द आउटपुट इट इज कमिंग तो मु एटी देखो खाली आउटपुट आसला एटी मु एंटर किसी करि पाउनी काहे एंटर कर पाउनी बिकॉज आई हैव नॉट रिटन इनपुट स्टेटमेंट मु माने यूजर टू इनपुट रिसीव करिया पई मु किछि लेखिनी स्टेट एटी कोड लेखिनी तो कोड लिखिबी एबे तो इनपुट करिया पई
प्रथमे मु गोटे टेक्निक फॉलो करी दैट इज कॉल्ड स्कैनर क्लास यूज करी। स्कैनर क्लास गोटे यूटिल लाइब्रेरी पैकेज रे अछि, ताको आगो मते इंपोर्ट करिया पड़ियो। import import java डॉट util डॉट स्कैनर, सॉरी स्कैनर। तापरे से जो स्कैनर क्लास रो मते कोन करिया पड़ियो, गोटे ऑब्जेक्ट क्रिएट करिया पड़ियो स्कैनर। ए स्टेप समझते कंपलसरी फॉलो करिया पड़ियो स्कैनर एंड ता भितरे सिस्टम डॉट आउट, सॉरी सिस्टम डॉट इन लिखिबी। ओके, तो एटा कंपलसरी एबे तुम माने बुझी थाओ। तो फ्यूचर रे तुम जदि डेव जावा कंप्लीटली पढ़िबो देन व्हाट इज द पर्पस व्हाई वी आर राइटिंग एवरीथिंग यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। सो एबे मु कोन करिवि, मते जो वैल्यूटा कि यूजर टू इनपुट करिवि सेई वैल्यूटा मु कोठे रखिबि ना एई मेमोरी रे रखिबि, प्रिंसिपल अमाउंट रे रखिबि। तो एटी सिंपल मु लिखिबि sc डॉट नेक्स्ट डबल, बिकॉज आई हैव टेकन द डाटा टाइप डबल। तो मुझे लिखिली तो यूजर जहाँ भी एंटर करिवो सेटा जाइए प्रिंसिपल अमाउंट रे स्टोर हो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो? Yes, sir. Yes. ओके, सिमिलरली मु Yes, sir. पचारिबी टाइम पीरियड। एबे पचारिबी टाइम period, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ପାଇଁ भी सेमती मु कोन करिवि, टाइम पीरियड एंट्री हला। तापरे मु कोन करिवि, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर को पचारिबी, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो एबे एटी से वेरिएबल टा को एटी प्लेस कर देबी। तो मते एबे एटा आउटपुट देखैबो। आउटपुट देला परे एटा कोन करिवो, तुमको वेट करिवो इनपुट एंटर करिया पई। इनपुट रे जहां एंटर करिवो सेटा जाकी ए मेमोरी रहइबो। एटा हेगला परे या काम सरी गला, तापरे एठी के आसीबो पुनी आउटपुट देखैबो तुमको एंटर टाइम पीरियड। तापरे तुमको वेट करिवो ए लाइन टा जे तुम किछि वैल्यू एंटर करो, जहां भी एंटर करियो से ए मेमोरी रे स्टोर कर दो वेरिएबल रे। तापरे पुनी आउथरे वेट करेबो, तापरे जहां तुम एंटर करिवो एटी से इनपुट कर दो। तो ऑल थ्री इनपुट आई गॉट फ्रॉम द यूजर। तो यूजर मिली गला परे नेक्स्ट मोर काम कोन ना सिंपल इंटरेस्ट रो वैल्यू कैलकुलेशन करिवार अछि। तो एल्गोरिथम मन पकाओ। तो इनपुट मिली गला परे मु कोन करबी, कैलकुलेशन करबी। व्हाट इज माय फार्मूला ना, व्हाटएवर प्रिंसिपल अमाउंट यू हैव टेकन you multiply it with the time period pt, then you multiply it with the rate of interest ptr. Got my point? Then what you need to do, you just write and you just divide it by 100. Everybody clear? Yes, sir. तो ये कैलकुलेशन करके तुमको दे दबो। दे देला परे तमे भी चाहिबो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करिया पई। तो आई कैन राइट द आउटपुट टू द यूजर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सिंपल मु लिखिबी simple सिंपल in इंटरेस्ट इज। सो एठी यार जो वैल्यू अछि जहां भी थिबो रिजल्ट, तो मु एठी कॉन्कैटिनेट कली माने बाहर प्रिंट करिली। तो एटा कोन होबो, डबल कोट भीतर जा लिखिची आज इट इज प्रिंट हे जिवो, एठी तारो वैल्यू प्रिंट होबो। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Clear. Okay, so let's save it and try to run it. Then your program will run beautifully. So it will wait for you to enter the principal amount. So for example, let me enter 1000 as the principal amount. Then it is telling me what is the time period. I am just trying to enter the 1 year. Then what is the rate of interest? Let me write 5. So 1000 ର 5% তাহলে কেতে টଙ୍କା হবো? 50 rupees হবো। Yes or no? Yes, sir. So let's see. The answer is 50 is coming or not? Hello. Yes, sir. So now Yes, everybody sir. clear? ताले एठी कौन कली? This is the step one where begin कली। जो algorithm टाको मैं एठी लिखी दो जाउतरे। Step one. This is called begin। तो एटा कौन दी comment? एटा कोड रन होबनी। एटा खाली हम बुझिया पे लिखुचे। ठीक अछि? तो begin हैला मेन रू। तापरे हमें कौन करले? एठी
reserve memory for storing data. Reserve memory for storing data. मो टाइप कला बेलू स्पेलिंग किसी मिस्टेक हो जाउथबो प्लीज ट्राई टू रेक्टिफाई दिस ओके तापरे एठी आमे कोन करिवा एक्सेप्ट एक्सेप्ट इनपुट यस और नो सेकंड स्टेप हमर थिला यस और नो Yes, sir. एक्सेप्ट इनपुट इनपुट हे गला परे स्टेप 4 रे आमे कोन करथिले कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट भी कले कैलकुलेट कला परे स्टेप 5 रे आमे कोन करथिले प्रिंट यस और नो प्रिंट एसआई एंड एटी तमरे कोन हैला ना एंड द प्रोग्राम मेन फंक्शन सरी गला तुम प्रोग्राम एंड हेगला सो दिस इज द स्टेप देखो मु एल्गोरिथम बनैतिल ताको देखि कोड लिखि परली सो दिस इज द अप्रोच यू शुड फॉलो ऑलवेज सो गोटे टास्क हमें कंप्लीट कर देले सक्सेसफुली थैंक यू फॉर योर पेशेंस लेट मी शो योर पेशेंस कहना देखो टाइम दरकार एथरे मु ट्राई करूची टिके क्विकली कहना प्रोजेक्ट को डेवलप करियार अछि एबे हमें को करिया चेक ए नंबर इज इवन और ऑड लेट मी राइट द कोड क्विकली so here I'm just creating a class even odd main function भी या भीतर रखिली finish कली ओके एटी क्रिएटेड तो अगेन एटी भी से मु गोटे यूजर टू इनपुट नेबी तो इनपुट नवा पई जो दरकार लेट मी कॉपी दैट फ्रॉम हियर ओके तो मु स्कैनर एटू नै जाउची एटी पेस्ट करूची मु आ यार एल्गोरिथम बनोनी तब माने बनै परिबो तो एटी लेट्स टेक दिस वन ओके स्कैनर हो गला तापरे मते एबे यूजर को पचारियार अछि गोटे नंबर तो एंटर कर बोली system dot out dot println enter a number so here I am creating a integer type of number and here what I will write sc dot next int मु इंटीजर वैल्यू रिसीव कली तापरे एठी कोन करबी कंडीशन चेक करिया पे हमें इफ एल्स यूज करू तो इफ एल्स रे कोन मु चेक करबी जो नंबर टा मु रिसीव कली ताकू जदी मु डिवाइड करबी 2 रे तार जदी रिमाइंडर 0 आसिला मु एठी कंपेयर कली जदी 0 आसिला ताले सेटा इवन नंबर जदी न आसिला एल्स पार्ट रे लिखिबी सेटा इवन नंबर नुह तो इफ एल्स हमें ए बळे यूज करू एवरीबॉडी क्लियर Yes, sir. ओके आज्ञा सर. println I am writing number is even here I am writing number is odd okay let's save it and try to run it then you will find the enter a number then I am just writing 5 so it is odd again you run the program then you write 6 then it is even all right this program is all clear so here if required this one I can skip this one execute or this one if execute this one तो दैट मीन्स आई कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तो मुझे एटा तुमको देखै दे परिबी डिबग करिकी आमे केमती एप्लीकेशन डिबग करू तो जे कोनोसी पॉइंट रे तमे एटी क्लिक करिवो डबल क्लिक करिवो दैट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट लाइन ब्रेक पॉइंट मु देइची तापरे मु एटा एप्लीकेशन टाकू डिबग मोड रे रन करिया को जदी चाहिबी एटी देखो डिबग आज गोटे ऑप्शन आछी देखि परछ समस्ते Yes, sir. तो इफ यू क्लिक डिबग तो ये कहूँ जे से डिबग मोड को स्विच करिया को चाहूचो कि यस मु चाहूची ताले ये डिबग मोड को पळेबो तो डिबग मोड को गले कोन हबो प्रोजेक्ट तमर देखो एठी तमे जहाँ जहाँ वेरिएबल क्रिएट करिवो तो एठू मु स्टार्ट करची एससी ऑलरेडी मु क्रिएट करची एठी देखै दउची तापर मु नेक्स्ट स्टेप को जीबी तो एठी तमे देखि परिवो स्टेप इनटू स्टेप ओवर तो एबे तमे स्टेप ओवर मारो देखो नेक्स्ट स्टेप को गलो तो तमरो इंट वेरिएबल क्रिएट हो जिवो आ मेमोरी ये वेट करिवो एठी तमटो इनपुट नवा पई जस्ट एठी से वेट करछि तमटो इनपुट नवा पई लेट्स एंटर 5 तापर तमे एठी क्लिक करो व्हाट इज हैपनिंग हियर जस्ट अ मिनट
ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ କାଟିଦେଲି କି ନାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇ ୱେରେ ଆମେ ଡିବଗ୍ କରିବା ବଟ୍ why this is not working ହୁଁ ହଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାନିବା ସରି ଆଫ୍ଟର ଏଣ୍ଟରିଂ 5 ୟେସ୍ ସରି 5 ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ତମେ ଏଣ୍ଟର ମାରିବ ଏବେ ଦେଖ ତମର ନମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ମେମୋରିରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିଲା 5 ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଏଭରିବଡି ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ତାପରେ Yes, ଦେଖ sir. ଏଇଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି Yes. ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି 5 5 ମଡୁଲସ୍ 2 ତମର କେତେ ହବ 1 ହବ ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ହବ 1 ହେଲେ ଏଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବନି ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଜମ୍ପ କରିବ କୋଉଠିକି ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14 କୁ କରୁଛି କି ନାଇଁ ତମେ ଦେଖ ଏବେ ସିଧା ଦେଖ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14 କୁ ଜମ୍ପ କରିଛି ନା ନାଇଁ Yes, sir. okay then हाँ so this is the way you can debug the application ତମେ step by step execution ଦେଖିପାରିବ ତମ application କେମିତି କାମ କରୁଛି so the debug mode everybody clear Yes, sir. okay this is like the way we are debugging our application anyway so even out salla let's move to the another so here we are going to find the student grade grade ମାନେ ଗୋଟେ student ର percentage basis ରେ ସେ କୋଉ grade ରେ belong କରୁଛି ଆମେ check କରିପାରିବା ଜାଣିପାରିଲ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତାର 3 ସବଜେକ୍ଟ ମାର୍କ ନେବି ଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମାର୍କ ହି ଇଜ ଏବୁଲ ଟୁ ସ୍କୋର 70% ଏବଭ୍ ତାହେଲେ ସେ ଏ ଗ୍ରେଡରେ ଯିବ ଯଦି 80% ଏବଭ୍ ହେଲା ଇ ଗ୍ରେଡରେ ଗଲା 80 ରୁ ଏବଭ୍ ହେଲା ଓ ଗ୍ରେଡରେ ଗଲା ଆଉ ଯଦି ତାଠୁ ତଳକୁ ରହିଲା ତାକୁ ଲେଟ୍ ଆମେ କରିବା ଡି ଗ୍ରେଡରେ ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ଯଦି 30% ତଳକୁ ରଖୁଛି ତାକୁ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ରଖିବା ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ଆମେ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମମାନେ ସବୁ କରିପାରିବ କି Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ତ ମତେ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏଠି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବିନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ହେଲା ଆମର କଣ ଓକେ Yes, sir. ନେକ୍ସଟ ଟାସ୍କ ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଟେବୁଲ ଅଫ ଏ ଗିଭେନ୍ ରେଞ୍ଜ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତ ଗୋଟେ ଗିଭେନ୍ ରେଞ୍ଜ ତମକୁ ଦେଇଥିବ ମନେକର ମୁଁ 5 ରୁ 10 ଭିତରେ ଯେତିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଟେବୁଲ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମତେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଟେବୁଲ ଆମେ ନର୍ମାଲି କୋଉଠୁ 1 ରୁ 10 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତାର ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରର ଅଲରାଇଟ୍ Yes, sir. Yes. তো এটি তাহলে মতে ইনপুট কোন কোন নবার ଅଛି না ୟୁଜର୍ସ ଟୁ ଦିଟା ରେଞ୍ଜ ନବାର ଅଛି ଗିଭେନ୍ ରେଞ୍ଜ ନବାର ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ତ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ କୋଡ୍ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଲେଟ୍ ମି ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ କୋଡ୍ ଫର୍ ଡୁଇଂ ଦ ଦ୍ୟାଟ୍ thing so now what I am going to do let's expand this code so here I am creating one new class multiplication tables yes so here also I need scanner class import java dot util dot scanner ठीक अच्छी तापरे हमें कौन करिवा एटी स्कैनर क्लास रा ऑब्जेक्ट क्रिएट करिवा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system dot in okay then what I will do I will ask to the user system dot out dot println यूजर को कौन पचारिबी एंटर रेंज okay so range means start range or end range let me ask separately starting range ठीक अच्छी तापरे हमें एटी कौन करिवा ना एटी let's create the starting range start range variable and you try to accept the value from the user through the next int similarly end range भी तापरे पचारिवा user को तो enter कर end range बोली end range तो एटी से user कौन करिवो e and d end range enter करिवो तो once user enter कला तापरे मु कौन करिवि तो start range रू end range रे मु कौन करिवि loop चलेबि is it clear already we know while loop for loop yes or no तो माने Yes, टिके sir. idea अच्छी Yes. okay if you have idea then you see
if there is a specific range I know, then I can use for loop. So here what I will do, I will write int I equal to start range. Okay, then I is less than equal to end range I plus plus. Okay, then what can I do? I will write the block of the loop. तो एटी कौन करिवा आमे बर्तमान स्टार्ट रेंज लेट मु देछि 5 मु एबे 5 एंटर करछि एंड रेंज लेट एंटर करछि 10 and always we should ensure that the start range should be less than end range. Is it clear? सेति पे आमे एटी Yes, कौन sir. लिखिबा if start range is less than end range ताले जाई कि मु प्रिंट करिया को जीबी तो यार ब्लॉक भितर लूप लिखिबी तो आमे एमती भी लिखि पारू इफ ऑल भितर भी लूप लिखि परिबा जदि नुह माने करो स्टार्ट रेंज भूल लेला प्लीज एटी गोटे आउटपुट मेसेज देवी द गिवन रेंज इज नॉट वैलिड. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Given range is not valid. Okay, all right. After that what I will do, एबे ए भितर को गली ए भितर देखो मु 5 मिलिला मते प्रथम तो 5 रो जति की तार पणिके अछि माने तार मल्टीप्लिकेशन टेबल अछि तो ताकू प्रिंट कर देबी तो ताकू केंति प्रिंट करबी ना अगेन मु 1 रो 10 चलेबी ना नहीं फॉर int let's write j equal to 0 and j is less than equal to 10 तापरे j प्लस प्लस. ओके तो या भितर मते प्रिंट करियर अछि कोन प्रिंट करिवि system dot out dot println. You can see here I will print the I value concatenate कली एटी मल्टीप्लिकेशन सिंबल गोटे देली प्रिंट करिया पे तापरे एटी j वैल्यू देली तापरे प्लस तापरे मैं डबल कोट भितर इक्वल टू लिखिली तापरे प्लस कली एटी मल्टीप्लिकेशन करिवि काहा को ना I को आउ j को. इट इज ऑल राइट एवरीबॉडी क्लियर? तो एई भलिया जेतले मु प्रिंट करिवि ताले कोन हबो ना लेट्स राइट हियर आ गोटे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन गोटे गोटे पणिकिया सरला परे परे मु कोन करिवि एटी गोटे तार गारो पके देबी ता तळे. ओके लेट्स राइट स्लैश इन फॉर टू टाइम स्लैश एन तो मैंने देखि परियो गैप रहिबो सब पणिकियार. एबे देखिबा स्टार्ट let's run. This is the simple thing I need to do and here you can do println. Okay, let's write println print the things line by line. Let's run it. तो ए प्रोग्राम टाको एबे रन करूची तो एठी से पचाला स्टार्ट रेंज let's enter 5 then click enter then you start entering the end range. एबे मन करो 2 देली ताले is it a valid range? Hello, এটা ভ্যালিড রেঞ্জ কি? हेलो No. No, sir. नो ताले तुम प्रोग्राम कौन दबो गिवन रेंज No, इज sir. वैलिड दबो तो यस तुम प्रोग्राम देला गिवन रेंज इज नॉट वैलिड तो प्रथम वैलिडेशन हम चेक कर देले. सेकंड एबे रन करिवा लेट्स एंटर द 5 एंड एंटर द 10 तो एबे जतले मु एंटर करिवि यू कैन सी द आउटपुट. जस्ट अ मिनिट तो आउटपुट देखि परिबो all the multiplication table between 5 and 10 has been printed. Yes, everybody clear? So here it is Yes, sir. coming from 0 0 नवानी हमें 1 रू नवा तो मु खाली चेंज कर देबी बट आसिला ना आसिलानी. हेलो Yes, हाँ sir. सर ଆସିଲା. ओके तो लेट्स सी तो एठी हमें कौन करिवा ना एठी जो आई रो वैल्यू जे रो वैल्यू 0 नहीं 0 जगह 1 नहीं जी. दैट्स ऑल. तो मोर काम सरी गला. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल आमे केमिति काम कला याकू जदि तमे चाहिबो डिबग करिया को यू कैन आल्सो डू द डिबग. तो स्टेप बाय स्टेप केमिति करिवो म बतेली तुमको. तमे फर्स्ट ब्रेक पॉइंट ऐड करिवो म आउथरे कहि दूची जोठू स्टार्ट करिया को चाहछो चेक करिया को चाहछो एठी कर्सर नबो डबल क्लिक कर दबो तो एठी ब्रेक पॉइंट गोटे ऐड हेगला पॉइंट गोटे ऐड हेला तो पॉइंट ऐड होला परे तापरे रन को जीवो डिबग करिया स्टार्ट करिवो डिबग और डिबग आज थिबो
करिवो कला पर यू विल फाइंड दिस डिबग कंट्रोल टूल्स तो स्टेप ओवर मारी मारी जीवो तमे देखिवो तो से केमती एग्जीक्यूट होउची गॉट माय पॉइंट Yes, sir. so up to this everybody enjoying or you are feeling bored Sir, enjoy. Enjoying, sir. Enjoying. shall we continue these two tasks तो एटी नेक्स्ट टास्क रे तुमको आरए विषय में कहबी एक्चुअली कहीं व्हेन वी आर गोइंग टू मैनेज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ थिंग्स देन आई नीड टू क्रिएट एन आरए कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टास्क रे आमे क्लास उप्स कॉन्सेप्ट विषय डिस्कशन करिया जाउछ तो ठीक अछि मु आज एई दीटा ही कंप्लीट करि दोछि कहीं इट इज अप टू 9 तापरे मु ओके बिफोर starting these two let me give you idea related to the project which I am planning for you ମୁଁ ତାର ବେସ୍ ଆଇडिଆ ଦେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିକି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଯେ ଟୁ ଡୁ ଆପ୍ କେମିତି କରିବା ତମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିକି ତମମାନେ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଓକେ ତ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତାପରେ ମୁଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସେଇଠି କହିଦେଉଛି ଟୁ ଡୁ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିବା କୋଉ ଭଳିଆ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି ତମେ ସେଇଠୁ ୱାଚ୍ କରିଦେବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଏଭରିବଡି Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके देन फाइन सो योर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड मु मोर एनर्जी दउची तमनको बुझिया पई तो लेट्स सी आमे एटा देखिबा बिल्डिंग ए टू डू ऐप तो टू डू ऐप माने कोन ना तमे डेली कॉलेज आसुचो यस कॉलेज रे तमे सकाळू कोन कोन करिवो गोटे लिस्ट करूचो जे एई पीरियड एई टाइम रे गोटे पीरियड हबो एई टाइम रे एटी पीरियड हबो तापरे मु कॉलेज रो गला बेलू को ट्यूशन जेबी तापरे नेक्स्ट एई टाइम रो मु पढिबी तो ऑल थ्रू द डे you are planning your task in your diary yes or no Yes, sir. Yes, sir. so once you complete your diary then जो one task ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମ ଡାଏରୀରେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଟିକ୍ ମାରୁଛ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ବନେଇକି ତମେ ତମର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିପ୍ କରିପାରିବ ଇଜ ଇଟ୍ hello so so if I want to do such kind of task then I can do by planning this project ओके तो नॉर्मली तुमर गोटे टू डू एप्लिकेशन तुम कौन थी गोटे डेस्क्रिप्शन थी तुम कौन करने जाऊच आउ गोटे कौन थी ना तुम ताकू चाहिए डिलीट कर पार्थुव काटी पार्थुव से टास्क को चाहिए ताकू मॉडिफाई कर पार्थुव चाहिए ताकू स्टेटस चेंज कर पार्थुव प्रथम थी पेंडिंग स्टेटस तापर जो कंप्लीटेड है तुम कंप्लीटेड कर पारियो यस और नो Yes, sir. ओके Yes. सो जोटा मुझे तुमको कहली ताको कहती प्रोब्लेम स्टेटमेंट तो तमें गोटे क्लाएंट तमें गोटे सॉफ्टवेयर डेवलपर को कहब कि मो पे गोटे छोट गोटे टू डू एप्लिकेशन टे बना जोटि कि मोर गोटे डेस्क्रिप्शन थिबो आउ सेठी मोर एई फीचर थिबो मु नुआ टास्क ऐड करि परिबी एक्जिस्टिंग टास्क को डिलीट करि परिबी आउ जो टास्क अछि ताको अपडेट करि परिबी आउ स्टेटस तार पेंडिंग थिले ताको कंप्लीटेड करि परिबी तो डेवलपर तम कथा सुनिला परे से इमिडिएटली जाके कोड करबनी से कौन करिवो ना तमरो एई जो स्टेप मु लिखिली टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क 5 एई अप्रोच रे जीवो प्रथमे तमरो से आप रो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को से भलरे बुझिवो सेकेंड तमरो प्लानिंग करिवो रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली एनालिसिस करिवो तापर तमरो एप्लिकेशन को जीयूआई एप्लिकेशन बनेबो कि कंसोल एप्लिकेशन बनेबो कि वेब एप्लिकेशन बनेबो सेटा से डिसाइड करिवो सेई अनुसार तार आर्किटेक्चर प्लान करिवो आर्किटेक्चर प्लान कला परे से कोन करिवो इम्प्लीमेंटेशन करिया को जीवो इज इट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. So now, if we are going to do that, तो first introduction रे देखो problem statement मैं इटे देली कौन ना to do app helps user to manage their task effectively. This is called problem statement. तो तार कौन फीचर रहिबो तमरो से प्रॉब्लम रो ना alt करि पारथुओ एडिट करि पारथुओ डिलीट करि पारथुओ mark the task as completed and display all the task in organized way. So these features should be there and कौन टेक्नोलॉजी हमें यूज करिवा मु एबे तमरो कंसोल एप्लिकेशन करिवा हमें एठी वेब एप्लिकेशन पढुनी कोर जावा रे हमें दी प्रकार एप्लिकेशन डेवलप करि परिया गोटे कंसोल एप्लिकेशन गोटे विंडोज एप्लिकेशन तो मु तुमको देखै देबी विंडोज एप्लिकेशन टू डू मु गोटे करिची तुमको देखै देबी जे केमती तेरा विंडोज एप्लिकेशन देखौची आ कंसोल एप्लिकेशन रे जेमती एबे सब प्रोजेक्ट प्रोग्राम मु करैली सेही टाइप रो CUI व्यू रे ही तमे देखिबो तापरे हमें एठी गोटे कांसेप्ट पढिया डाटा स्टोरेज फॉर डायनामिक स्टोरिंग ऑफ and manipulating the array that is called array list ता विषय डिस्कशन करिकी एठी हमें
ताको कंप्लीट करिया तापर देखो वंस तमे प्रोब्लेम स्टेटमेंट को भलो भाबरे बुझी गलो तापर तमे कोन करियो प्लानिंग करियो तमे कोन करियो तो अंडरस्टैंड द प्रोब्लेम स्टेटमेंट देन डिफाइन द कोर फीचर तमे ऐड टास्क केंदे ऐड करियो एडिट करियो डिलीट करियो व्यू करियो एतिकी काम तुमको लिस्ट आउट कला परे तापर तमे वेयर फ्रेम करियो किबा डिजाइन लेआउट करियो तमे केमिति यूजर रो इंटरफेस देखिबो तमे भाबिबो जे ए प्रोजेक्ट जतले करबी क्लाइंट जो आउटपुट देखुची देखो एटी जो मु प्रोग्राम रन कली मु एटी डिसाइड कली कि जे क्लाइंट जो आउटपुट केमिति देखिबो एटा मो आखि आगरे अछि बोली मु लेखिली ना नहीं देखो ए जो यूआई टा हेलो Yes, Yes, sir. sir. ଏଇଟା ମୋ ଆଖି Yes, ଆଗରେ sir. ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର ଦେଇଦେଲି କି ହଁ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟଟା ଏଇଭଳିଆ ଆସିଲେ ବେଟର ହବ ତ ମୁଁ ସେଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ସେ ପିକ୍ଚରଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି ତ ସବୁବେଳେ ତମେ ଆଗ ଭାବିବ ଯେ ମତେ ୟୁଜରକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେବି ତ ହାଉ ସୁଡ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ତ ଏଇଠି ଯଦି କନସୋଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ କରିବି କନସୋଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କ'ଣ ହବ ଯଦି ୱିଣ୍ଡୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ କରିବି ତାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କ'ଣ ହବ ତ ୟୁଆଇ କ'ଣ ହବ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଡିଜାଇନ କରିବା डिजाइन कला परे को टेक्नोलोजी रे मु डेवलप करी मु डिसाइड करी तापरे मु नेक्स्ट स्टेप रे इम्प्लीमेंटेशन काम स्टार्ट करी अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट लेट्स गो टू द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर तो फर्स्ट तुम डिसाइड करिवो कि इनपुट मते कौन कौन नबार अछि तो टास्क डिटेल्स मते इनपुट नबार अछि तो सेति पई मते कौन करियार अछि ना क्लास बनेयार अछि काने गोटे टास्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थिंग टास्क रो आईडी रखिथिबो टास्क रो डिस्क्रिप्शन थिबो आउ टास्क रो स्टेटस थिबो तीनटा जिंस को जतले मु मेंटेन करबी ताले डेफिनेटली मते गोटे क्लास तयारी करिया पड़ियो इज इट क्लियर तो मते गोटे टास्क क्लास एठी तयारी करिया पड़ियो तापरे से टास्क को मैनेज करिया पई टास्क आरे गोटे बनाइବାକୁ पड़िबो मल्टीपल टास्क को गोटे जगह स्टोर करिया पई तापरे सेई ऊपर कोन कोन ऑपरेशन करिवे ऐड एडिट डिलीट सेति पई फंक्शन मते लिखिବାକୁ पड़िबो सेमति लिस्ट देखैया पई गोटे शो ऑल फंक्शन लिखिବାକୁ पड़िबो बा से क्लास भीतर मेथड लिखिବାକୁ पड़िबो ओके एंड डाटा मैनेजमेंट करिया पई मते आरे लिस्ट यूज करिया पड़िबो अप टू दिस क्लियर Yes, sir. Yes, sir. next what I will do next I am going to write the code create the project इम्प्लीमेंटेशन स्टेप को जीवा पड़ो तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप रे आमे कौन करवा ना सेट अप द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करूँ तो सेमती गोटे टू डू आप बोली क्रिएट करिवो सेकेंड तुमको गोटे टास्क क्लास बनायार अच्छी विथ द आईडी डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस थर्ड तुम जावा प्रोग्राम तुम लिखिबो लिखला पर तुम मेथड सब इम्प्लीमेंटेशन करिवो फॉर ऑल फंक्शनैलिटी तापरे डाटा आरे भितर स्टोर करिवो आ सेठू डिलीट करिवो ऑल ऑपरेशन यू कैन डू द आरे लिस्ट ओके आउ जेतल जो ऑपरेशन करथो जहां भी अपडेट हैला सेटा को यूजर इंटरफेस रे तमे अपडेट डाटा देखौथुबो एतिकी काम हमको करियर अछि तो until and unless we are not planning properly it is very difficult to do or develop a project up to this clear everybody hello Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay sir. ताले एबे मते तम माने कुह केते टाइम हैला एबे इट इज 9 ऑलमोस्ट 9:30 हेबाकू जाउची तो कैन यू वेट फॉर हाफ एन आवर सो दैट आई कैन कंप्लीट द कंप्लीट टू डू अप जदि वेट न कर पारिबो देन आई कैन शेयर यू दैट वीडियो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड लेट्स कंप्लीट दिस टू रिमेनिंग टास्क तो माने एबे मते आई नीड सजेशन फ्रॉम यू पीपल हेलो कौन करिया हेलो Sir, complete करिए. कंप्लीट करिया अरे दैट्स एनर्जी आई Sir, आई लाइक दिस continue करिए. अच्छा Yes, sir. ओके फाइन वो मनंगटू मो पाउनी किछि रेस्पॉन्स ठीक अछि लेट मी कंप्लीट दिस टू टास्क देन आई एम गोइंग टू कंप्लीट द टू डू अप टास्क लेट्स कंप्लीट इट ओके फ्लो रे चली कंप्लीट कर दवा बेटर होबो तो फर्स्ट होची मैनेज लिस्ट ऑफ नंबर्स ओके तो तापरे मैनेज बुक्स तो लेट्स सी तो वंस वी कंप्लीट दिस देन वी आर गोइंग टू implement the to do app so let me create two files directly here right click new class I'm writing numbers
main function ଆଉ ଗୋଟେ new class books book class ଗୋଟେ ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ class ନଉଛି ମୁଁ manage books କାଇଁ ନଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ books and ୟା ଭିତରେ ମୁଁ main function ରଖିବି okay let's see manage numbers means so if I want to control more than one number then I need to create the array what is array is the collection of elements similar type of elements in Java clear how can you create array so there is 1D array 2D array 3D array so different type of array are there so here I am going to use 1D array so 1D array mu integer array create କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ କେମିତି create କରିବି int okay here I am writing array name equal to new तापरे एट लिखिबी integer so let me store 5 integer value into the array तो एटा जते array मु create कली actually से कोन करिवो ना a bulk chunk of memory जाय कि store होई जिवो कोठी hello so देखो एटी कोन हबो when you are creating this array तो in the memory जतले normal मु integer x create करथली तो memory रे गोटे ही block रिजर्व होतला ए केस रे कोन हबो पांचटा integer block जाय कि रिजर्व होई जिवो ओके ठीक अच्छे तो एटी 0 एटा हला 1 एटा हला 2 एटा हला 3 एटा हला 4 तो एबे इनिशियली सेतर किछि वैल्यू नथिबो डिफॉल्ट वैल्यू थिबो सबथरे 0 थिबो एबे मु कोन करिवि ना एटी जेतले लिखिबि a r r of 0 what is it is called subscript जदि मु एई जगह रे एटा कहंती error 0 एटा को कहबी error 1 एटा को कहबी error 2 and this is error 3 error 4 तो मु जदि लिखिबी arr 0 equal to 2 ताले एई जगह रे तमर जाय कि 2 स्टोर हो एवरीबॉडी क्लियर जदि मु लिखिबी system.out.print arr of 0 ताले तमर प्रिंट कोन करिवो ना 0 ता माने मु array भितरे वैल्यू स्टोर करि परिबी आउ फेच करि परिबी यूजिंग array subscript तो these are called index and these are called subscript up to this clear everybody array Yes, subscript sir. okay तो एबे मु कोन करि परिबी एबे मु एटा काटी दोछि हला एठी error 0 equal to मु एबे 1 by 1 वैल्यू रखुछि तो I can store arr 1 equal to 3 I can store arr 2 equal to 4 सो ए भलिया मु रखि परिबी तो मैक्सिमम इंडेक्स केते हबो ना 0 रु स्टार्ट हैला तमरो साइज -1 दैट इज मीन मैक्सिमम इंडेक्स 4 तो 4 पर जदि तमे लिखिबो arr 5 ताहले से गोटे एक्सेप्शन थ्रो करिवो कोन एक्सेप्शन ना array इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन सो सेति पई हमर एटा डेवलपर रो रिस्पांसिबिलिटी तो जेते बेले साइज दोछु आमे एक्सेस कला बेलकू इंडेक्स टा केबे हेले ओवरफ्लो हो नथुवो array इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन देखेबो अप टू दिस क्लियर Yes, sir. Yes, sir. exception so this will show this kind of exception ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କେୟାର ନବା ଯେ ୟା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଏବେ ମୁଁ କଣ କଲି ଆରେ କୁ ନର୍ମାଲି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ୟୁଜରକୁ ପଚାରିବି ତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟର କରୁ ତ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ୟୁଜରଠୁ ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଇମ୍ପୋର୍ଟ java dot util dot scanner okay then एटी कौन करी scanner sc equal to new scanner system dot in okay all right तो तापर मैं कौन करी यूजर को पचारि system dot out dot print ln enter just a minute enter okay मु एटी लूप चलेबी हाँ enter values into the array enter numbers into the array numbers into the array array okay
तापरे मो नंबर्स एंटर करिया पे मु गोटे फॉर लूप नेली तो लेट इंटीजर I इक्वल टू 0 तापरे I is less than मोर array रो predefined method अछि ए जो property अछि that is called length तो I can get the length then I can write I plus plus ओके तो लेंथ कौन दबो ना तो टोटल तमर केतेटा आइटम array रखुची ना 5 तो लेंथ दबो तुमको 5 तो तो मोर एटा 0 रु जदी स्टार्ट हैला एटा केते जाय लूप चलिबो 4 पर्यंत लूप चलिबो ओके तो नाउ I will ask to the user system dot out dot println enter value at index 0 is it clear enter value at arr of सर सेटा सिस्टम रे System कमांड dot अछि out. हाँ फाइन फाइन से एरर देखिबो मु कर देब से तो एठी कोन करबा ना एई जगह रे हमें पचारिबा एंटर वैल्यू एट arr ऑफ 0 तो देखो एठी कोन करिवो ना स्कैनर ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट करि छरिछो तो एठी लिखिबो arr ऑफ I equal to sc dot next int. This is the way we can enter value into the array. Is it clear? तापरे हमें एबे array रो value को print करके देखेबा तो let me write one statement here print numbers from in present in the array. Okay, print numbers present in the array. Okay, so then what can I do? I simply try to print the, let me redesign this one. I am writing arr just a minute plus I plus this equal to the whatever value I can write like arr of I. ओके तो देखो ए लूप चलिबो माने सबुद को प्रिंट कर दबो कोन कोन को इंडेक्स रे को वैल्यू अछि जस्ट सी तो लेट्स रन इट ओके से पचला एंटर वैल्यू एट दिस आई एम एंटरिंग 5 एंटर वैल्यू एट 1 2 3 7 8 तो मोर पांचटा वैल्यू हे गेला तो सबुद वैल्यू प्रिंट हेकी देखेला ना देखेलानी हेलो Yes, sir. Yes, ठीक अछि sir. तो मु कहबी एबे यस आरे सर भितरे जेतेटा नंबर मु एंटर करिवि समस्त कर सम बाहर करिक मते दियो तो करि परिबो ना करि परिबोनी यस यू कैन डू केमति करिवो ना मु एठी को करि परिबि एठी लूप चलेला बेलकु कोठी भी मु एठी फाइंड द सम तो आई कैन राइट सम इक्वल टू 0 तापरे मु लूप चलेबी सेम लूप फॉर and there is another loop that is called for each loop you can use the for each loop केमते यूज कराउची मु एठी खाली आइडिया दे दउची तो एठी कोन करिवो ना for each loop गोटे गोटे आइटम को एलिमेंट को फेच करिवो लेट राइट नंबर कोलन दे दबो एठी आरे लिखिवो तो आरे रु से गोटे गोटे वैल्यू को काडी काडी आनिमो काडी आनी की एठी मु जो ऑपरेशन करिया को चाहिबे आई कैन डू इट आई कैन राइट सम इक्वल टू सम प्लस whatever number is coming so I need to add it once this loop is finished then मोर सम मिली जाइथिबो सम मिली गले मु एठी ताको चाहिले प्रिंट करके देखै परिबी तो फॉर इच लूप समस्त बुझिलो फॉर इच लूप रे हमें कौन लिखिबा ना एपट साइड रे आरे लिखिबा एठी कोलोन लिखिबा तो ये कौन करिवो जो वैल्यू मु रखुची मु इंटीजर वैल्यू रखुची गोटे इंटीजर वैल्यू आनली बट ए वेरिएबल भितर स्टोर कली तापर ताको जहां यूज करिया कथा कली पुनी नेक्स्ट आइटरेशन रे से कौन करिवो आरे रे थिबा आउ गोटे वैल्यू को उठेइबो ए भीतर रखिबो ताको हमें एठी यूज करिबा तो दिस इज द वे फॉर इच इज वर्किंग एवरीबॉडी क्लियर एंड फॉर इच ऑलवेज वर्क्स विथ आरे तो एठी मु सम टाको प्रिंट करिवि मते सम मिलि जिवो तो लेट्स सी लेट्स रन इट सो एठी मु एंटर कली 3 5 6 sorry and 7 so then enter 8 then you find all the value loop through ରୁ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ତାପରେ 29 ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସମ୍ ଟୋଟାଲ ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ଲିୟର ଏଭରିବଡି हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो एबे हमें आरे विषय टिके आइडिया पाइले तुम माने पढ़िबो नेक्स्ट आमे मैनेज करिया बुक तो जेतेले मु बुक कथा कहूची चिंता करो बुक गोटे गोटे इनफॉरमेशन को होल्ड करूची ना मल्टीपल इनफॉरमेशन को होल्ड करूची जस्ट टेल मी
ଯେତେବେଳେ Multiple. ଗୋଟେ ବୁକ୍ କଥା କହିବି ତ ବୁକ୍ ର କଣ ଥିବ ନା ବୁକ୍ ର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିବ, ନିଜର ଆଇଡି ଥିବ, ତାର ବୁକ୍ ର ନେମ୍ ଥିବ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो। ବୁକ୍ ର କଣ ଥିବ, ଅଥର ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ ର ନିଜର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ନା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Sir, Yes, yes, sir. sir. ଆଉ ବୁକ୍ ର ପବ୍ଲିଶର ବି ଥିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କଥା ଭାବିବା ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ। ତେଣୁ ମତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁନିଟ୍, ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ବୁକ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ट्राए कर बुझिया मुझे जहाँ कहूँ, जदि मु इंटीजर एक्स लिखुची एथर मते खाली इंटीजर वैल्यू ही रखिपारि। जदि मु स्ट्रिंग लेली, स्ट्रिंग नेम लेली, एथर खाली गोटे नेम ही रखिपारि। ओके, मल्टीपल वैल्यू रखिपारुची कि वेरिएबल रे? नो। No, sir. No, Why I sir. cannot store? Because these are all primitive type. Primitive type रे मु मल्टीपल जिनस रखिपारि नाही। तो सेति पई तुमको को डाटा टाइप दिया जाएनी जे এই डाटा टाइप यूज करिके तमे मल्टीपल वैल्यू रखि परियो। सेति पई तमे तमर निजरो डाटा टाइप तयारी करिवो। निजरो डाटा टाइप तयारी करिया पई जावा तुमको प्रोवाइड करची बहुत सारा फीचर। गोटे होची क्लास, यू कैन क्रिएट योर ओन क्लास। आउ गोटे होची इंटरफेस, तुम निजर इंटरफेस बनैकी भी तुम डाटा टाइप तयारी कर परियो तो निजर। आउ गोटे होची एनम, एनम यूज करिक भी तुम डाटा टाइप तयारी कर परियो। बट एबे आमे को कांसेप्ट यूज करिया, बट समस्तंकर पर्पज अलग 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 सिचुएशन रे सेडा यूज हेबे। तो हमर एई केस रे आमे एबे यूज करिया क्लास। इज इट क्लियर? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तापरे तमे एबे मन रख केतेबेले आमे क्लास तयारी करिया कथा ना जेतेबेले मोर गोटे सिंपल जिंस मल्टीपल इनफॉरमेशन को आज ए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करूची, सेतेबेले मु कौनसी डाटा टाइप नाही एति मल्टीपल वैल्यू को से होल्ड करि परियो। सेति पई मोर निजर गोटे डाटा टाइप तयारी करिवि, दैट इज कॉल्ड क्लास। तापरे मु तार ऑब्जेक्ट, तार वेरिएबल जेते तयारी करिवि, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। सीए कोन करिवो, एई मानको मेमोरी एलोकेट करेबो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट द क्लास। तेणु जावा रे हमें क्लास केमती क्रिएट करछे, देयर इज ए क्लास कीवर्ड, देन वी आर यूजिंग क्लास नेम, देन विदिन द कर्ली ब्रैकेट्स दीज आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स और फील्ड्स। तो आमे एपे एटी फील्ड गोटे गोटे डिफाइन करिवा। तो ये इंटीजर रहिबो, नेमटा कौन रखिबो, स्ट्रिंग रहिबो। इज इट क्लियर? तापरे अथर कौन रहिबो, स्ट्रिंग रहिबो अथर। तापरे स्ट्रिंग प्राइस रहिबो, तापरे स्ट्रिंग पब्लिशर रहिबो, प्राइस टा रहिबो डबल, आउ एटा पब्लिशर। तो एठी हमर क्लास टा सरी गला। अप टू दिस क्लियर? तो तुम क्लास तैयारी करदेला परे तुम कौन करिपरिवो, तार वेरिएबल तैयारी करिवो। जेमती आमे इंटीजर एक्स डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल तैयारी करछे, एबे मोर डाटा टाइप बनिगला, याकू नेकी मु गोटे वेरिएबल तैयारी करि परिबी। जेतल मु वेरिएबल तैयारी करिबी, ये जेतल मेमोरी एलोकेट करिवो इन ए चंक, समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मेमोरी एलोकेट कर, आईडी ପାଇଁ एलोकेट करथिवो, नेम ପାଇଁ करथिवो, ऑथर ପାଇଁ करथिवो, प्राइस ପାଇଁ करथिवो, पब्लिशर ପାଇଁ। तो गोटे वेरिएबल क्रिएट कलो, ये पूरा गोटे यूनिट विथ मल्टीपल मेंबर्स ପାଇଁ वेरिएबल डिक्लेयर कला। जदि पुणी आ गोटे मु वेरिएबल क्रिएट करिवि, तमे मु जा कहूची सब विजुअलाइज करो, बुझ, थरे बुझी गले तमे आराम से काम कर परियो। तो दिस इज बुक 1। तो बुक 1 भी कोन करिवो, आउ थरे मेमोरी एलोकेट करिवो, ता भीतर थिबा सब मेंबर ପାଇଁ से मेमोरी एलोकेट करेबो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज बुक 1। ताले जेते ताले हमर क्लास क्रिएट करियार ऑब्जेक्टिव कोन ना, आमे हमर निजर डेटा टाइप बनेले हमर रिक्वायरमेंट बेसिस रे। आउ सेटर जो वेरिएबल क्रिएट कली ताको कहबी मु रेफरेंस वेरिएबल। आउ जेतले वेरिएबल क्रिएट करछु मु, एबे वेरिएबल क्रिएट कले एक्चुअली मेमोरी एलोकेट हुएनी। आमे तार ऑब्जेक्ट जेतले इंस्टेंस करिवा, आमे एठी एक्चुअली एमति लिखिवा न्यू बुक, एमति लिखिले तमर जायकी मेमोरी एलोकेट हुए। आउ जो मेमोरी ये कौन करे, ये मेमोरी एलोकेट करे आर यार एड्रेस टाको रिटर्न करे जे कि तमरो ये बुक ताको होल्ड करे। तो बुक को कहा रेफरेंस वेरिएबल व्हिच रेफर्स टू दिस ऑब्जेक्ट। एटा एक्चुअली तमरो ऑब्जेक्ट। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Clear. ओके Yes, sir. ओके। ताले आमे एबे कोन करिवा, बुक क्लास तयारी करिवा, बुक रो डाटा मेंबर्स डिफाइन करिवा, तापर जाई कि तार ऑब्जेक्ट तयारी करिवा। ऑब्जेक्ट तयारी करिकी एई ऑब्जेक्ट भितर डाटा रखिबा, रखिला परे आमे ताको प्रिंट करिवा। लेट मी डू दिस थिंग। तो आमे क्लास तयारी करिवा। आ नॉर्मली मन रखो, गोटे क्लास रे कोन कोन थाए, गोटे क्लास रे
तो माने पढ़िଛ उप्स पढ़िलानी हेलो Yes, sir. Yes, sir. गोटे Yes. क्लास रे डाटा मेंबर्स थांती और ताको आमे कहबा वेरिएबल्स फील्ड्स कहबा आउ मेथड्स थांती गोटे क्लास भितर Function. स्पेशल मेंबर्स थांती कंस्ट्रक्टर ओके कंस्ट्रक्टर तापर इनर क्लास बहुत सारा जिनस अछि आमे बेसिकली ए तीनटा जिनस गोटे क्लास भितर थाए सेटा को आमे एबे सिखिबा तो मु एबे कोन करछि बुक क्लास तयारी करिवि सेतर डाटा मेंबर डिफाइन करिवि तापर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करिवि तापर मेथड डिफाइन करिवि एज पर माय रिक्वायरमेंट तापर मोर क्लास कंप्लीट पर ताको मु टेस्ट करिवि ऑब्जेक्ट क्रिएट करिकि लेट्स डू दिस वन तो फर्स्ट लेट मु क्रिएट करि सारछि ऑलरेडी गोटे क्लास बुक एठी मोर डाटा मेंबर्स को मु डिफाइन करछि नॉर्मली देखो एठी मु कोन करछि सो हियर आई एम राइटिंग integer book id तापरे string book name string book author string book publisher okay sorry so once I have done with this तापरे boule double book price. So let's define all this. These are called instance variables. So once we create this variable, let's define the constructor. The constructor normally defined like public, and constructor is the special method inside the class. Its name is same with the class name. It do not have any return type. And here what I'm going to do, I am going to declare the parameterized constructor. So let's write book ID and here string book name string book author तापरे string कौन लिखी book publisher here publisher तापरे UBL double book price book here I see okay so all the parameter I have defined then I need to initialize the instance member like the way book ID for example book ID equal to book ID then this dot book name equal to book name this dot book author equal to book author okay this dot book publisher equal to book publisher okay what I have written here sorry publisher and finally this dot book price equal to book yeah this price okay तो मु एबे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देली कंस्ट्रक्टर डिफाइन कला पर सिंपल गोटे मेथड नोची खाली प्रिंट करके देखैबी book information so here I am defining one method let's write void and here I write show book okay गोटे show book method नोची एटी कोन करची मु system dot out dot println so here I can write book ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖୁଛି book ID plus this dot book ID तो मते जहाँ जहाँ information दरकार how many information 1 2 3 4 5 so let's paste it in 4 time ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ନେବି book name ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି book publisher author then book price okay तो
बुक नेम तो एईटा टास्कटा सारी देकी आमे एक्चुअली वाइंड ऑफ करिवा मत लागुची तुम माने भी हेक्टिक फील करिवनी तो लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट ओके बुक publisher after that book author after that book price is it clear everybody hello তাহলে ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସଟେ ଡିଫାଇନ୍ କଲି ଏଇ କ୍ଲାସଟେ ଡିଫାଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଇ କ୍ଲାସ ମୋର ଡାଟା ଟାଇପ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା ତ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ରେଡି କରି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରିପାରିବି ଭେରିଏବଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବି ଲେଟ୍ ମି କ୍ରିଏଟ୍ ୱାନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ଲୁ এটা ହେଲା ୟାକୁ କହନ୍ତି ରେଫରେନ୍ସ ଭେରିଏବଲ୍ ଆଉ ଏଇ ରେଫରେନ୍ସ ଭେରିଏବଲ୍ରେ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସାଇନ୍ କରିପାରିବି ତ କ୍ଲାସର ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ଏମିତି we can create like this. So since there is only one constructor that is called parameterized constructor, ताले मु book रो सब information एटी पठे को पड़ियो मते 80 तो let मु book रो id देली 100 book रो name दोची java programming okay next information कौन अछि book name गला book name पर author publisher price okay तो then let's author मो लिखली Daniel Liang. This is a beautiful book. Publisher, let's write BPB. So any publisher. Then its price is 1000 rupees. So now what is happening? Your object will be created and referred by the book. तापर तमे माने एबे चाहिबो जे तार प्रिंट करके देखियार अछि जे बुक रे कोन कोन इन्फॉर्मेशन रहिला सिंपल तमे कोन करि परिबो तार मेथड मेंबर को कॉल करि परिबो वन ऑफ द मेंबर शो बुक तो एतिकी मु रन करूची तमे देखो तमर प्रोग्राम को करिवो बुक रो इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके देखै परिवो अप टू दिस क्लियर हेलो Yes, sir. तो इन Yes, sir. Sir. यू कैन क्रिएट लेट मी राइट इट बुक वन गोटे बुक क्रिएट कलो सिमिलरली तमे एबे चाहिबो बुक टू भी क्रिएट करि परिवो तो बहुत सारा वेरिएबल क्रिएट करि परिवो लेट मी राइट बुक टू इट इज बुक टू दिस इज आल्सो बुक टू एटी मु कौन करुची 101 लेट्स जावा प्रोग्रामिंग जगह मु लिखली सी प्रोग्रामिंग एंड एटी ऑथर ना चेंज कर देली लेट वाई कानिकर एंड लेट्स टाटा मैग्रो हिल and its price let's write 700 so if you run then you will find another book to be printed so there are two books this is the first book this is the second book तो दीटा वेरिएबल क्रिएट कली एतिकी समस्ते बुझिलो ना बुझिलोनी हेलो Yes, sir. ओके हाँ सर बुझिला हाँ तो आम ये कौन कर ना ऑब्जेक्ट बनई परिबा तो एटा जेंति गोटे गोटे वेरिएबल जेंति मु नउतली इंटीजर गोटे इंटीजर x गोटे नउतली इंटीजर y नउतली तो सेपरेट सेपरेट वेरिएबल नउतली तापरे मु कौन कली मु आरे बनै देली मोर देन वन नंबर को रखिया पई एभले बनैली ना नहीं आरे बुझिउची तो एटा कहबा आरे ऑफ Yes. इंटीजर सिमिलरली आरे ऑफ बुक ऑब्जेक्ट्स भी तमे बनै परिबो केमती बनैबा देखो बाय लुकिंग एट दिस जेतु इंटीजर गोटे डाटा टाइप तमर बुक भी डाटा टाइप यू कैन यूज book okay like the okay here I am writing my books array name लिख देली my books equal to new integer 80 integer अछि integer जगह रे मु एबे कोन पकेबी book up to this clear everybody तो let me write 3 ता माने my books केतेटा बुक को होल्ड करिवो तीनटा बुक को बुझिला तो एटी कौन हम ना तुमर ये तीन ब्लॉक क्रिएट है एटा 0 इंडेक्स एटा 1 इंडेक्स एटा 2 इंडेक्स तो एटी जंती तो बुक 1 क्रिएट करथलो गोटे रेफरेंस वेरिएबल बुक 2 क्रिएट करथलो आ गोटे रेफरेंस वेरिएबल एटी तुमर आरे ऑफ बुक्स तुम क्रिएट कल तो तीनटा रेफरेंस वेरिएबल हैला एटा गोटे बुक 1 भलिया एटा गोटे ता माने ए बुकटा एटी मु कोन कली गोटे ऑब्जेक्ट असाइन कली कि नहीं एटी भी गोटे ऑब्जेक्ट असाइन कली एवरीबॉडी क्लियर हेलो
Yes, sir. Yes, sir. Similarly, I can assign one object into this reference variable. I can assign another object into this reference variable. I can assign another object into this reference variable. So this is the way we can deal with array of object. This is nothing. This is called array of object. Everybody clear? Yes. ओके ता माने मु एबे तीनटा रेफरेंस वेरिएबल खाली क्रिएट करची आरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेइनी तो ताको केमती बनेइबी लेट मी शो यू मु एटा लास्ट देखे दोची तुमको ओके ठीक अछि एठी आमे कोन करबा जस्ट 5 मिनिट आउ होल्ड करो पेशेंस रखो त आमे एटा सार दो तो देखो एठी बे हे गेला तो मु एबे लिखबी माय बुक्स ओके ऑफ 0 इक्वल टू नेक्स्ट आमर जदि सेशन हबो सर मते कहितले जदि तुम माने इफ यू आर एग्री देन वी कैन टेक ए 15 आवर्स रो गोटे सेशन कंप्लीटली प्रोजेक्ट डेवलप करबा सेतले तो एबे हम खाली तुमको एति आइडिया दे दोची तो एबे देखो आई कैन स्टोर द बुक ऑब्जेक्ट लाइक द वे ए भलिया इंडिविजुअली मु रखि परली एबे मु खाली कीबोर्ड रो नौनी एबे मु स्टैटिकली रखुची आगु को हमें कीबोर्ड रो यूजर को पचारि की डिफरेंट इंफॉर्मेशन रखि परिबा तो एबे देखो तीनिटा को मु ऑब्जेक्ट रखली ना नहीं हेलो so all three books has been initialized here with let me write it 3 it is 4 it is 5 এটা লিখি দেওয়া জাভা প্রোগ্রামিং 1 জাভা প্রোগ্রামিং 2 জাভা প্রোগ্রামিং 3 let's change this information or not price भी change कर दवा ठीक है এটা লিখি দেওয়া 2 টা let's 1500 let's this is 2000 okay all right तो वर्तमान तमरो array of books ready हे गला तो तमे ताको प्रिंट करिया को चाहूछ तो आरे को नॉर्मली हमें लूप थ्रू रे डील करू तो मु जदी फॉर इच लूप ले यूज करबी कि बा फॉर यूज करबी तमे यूज करबी फॉर इच लूप रे ताले कोन करबी ना मु गोटे गोटे बुक को पिक करबी तो बुक को पिक करिया पई मु ए बेले लिखि परबी माई एपट रखली आरे से आरे रु गोटे गोटे बुक ऑब्जेक्ट आनी कि या भीतर रखिली या भीतर को रखला पर एटा इटसेल्फ गोटे ऑब्जेक्ट तापर मु कोन करबी बुक डॉट शो बुक्स कॉल करि परबी तो देखिबो तीनटा को ऑब्जेक्ट प्रिंट हे जाइतिबो लेट्स रन इट एंड चेक इट प्रिंट हेछि ना नहीं हेलो Yes, sir. ओके सो देयर आर Yes, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस आमे तो डिस्कशन करिबा तो एनीवे तो मु टू डू आप रो गोटे वीडियो बने कि तुमको देई देबी काइना आई डोंट वांट टू मेक यू बोर सो ऑलरेडी तुम माने बहुत बोर हेई गलानी ऑल राइट सो हाउ यू फील एतिकी किछि क्वेश्चन कार अछि प्लीज जस्ट आस्क मी हेलो Yes, sir. यस कार किछि क्वेश्चन अछि पचार first of all you tell me all of you enjoy this session whatever we have discussed so far Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, स्लाइड sir. शेयर Yes, कर sir. देबी So सैंपल much. प्रोजेक्ट्स तुमको शेयर कर देबी Yes, sir. ओके तो तुम नेक्स्ट स्टेप हम तुम प्रैक्टिस करो मोर द मोर कोड यू एंड तुमको गोटे बढ़िया जिनस देखौची जे तुम केमती जानिबो जे तुम कैरियर पाथ कोन जावा जदी सिखुछ सो देयर इज ए पाथ पाथ डॉट आईओ बोधे ना ना ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି path dot sh बोधे path sh ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ जावा लर्निंग पाथ हाँ रोड मैप डॉट एस एच ओके सो एवरीबडी सी रोड मैप डॉट एस एच जावा तो यही लिंकटा तुम देखीदब ये सब देखिपर इफ यू वांट टू बी ए जावा डेवलपर देन व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न स्टेप बाय स्टेप नॉट एट ए टाइम सब किसी शिखी स्टेप बाय स्टेप तुम जाकि शिखिपर ये सब जिन तो एटलिस्ट फॉलो दिस साइट सब टेक्नोलोजी पाथ से देखी तुमको तो मैंने यहाँ देख ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशॉप जदि कार किसी क्वेश्चन अच्छी प्लीज लेट मी नो otherwise just share your feedback I will love to know your feedback
तो ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲିଙ୍କ ବି ପଠଉଛି ଗୁଗଲ ଫର୍ମରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଟ୍ରେନିଂ ତମର ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ widely acceptable ଆଉ don't feel hesitant you can write the true feedback ମତେ true feedback ଦବ ଯାହା feel କଲ ତମେ all right କାର କଣ Sure, question sir. yes so all of you Okay, enjoyed sir. complete session ସମସ୍ତେ enjoy କଲ Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. କିଛି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଶିଖିପାରିଲ Yes, sir. Aଜ୍ଞା, ଠିକ sir. ଅଛି ହଁ ଟୁ ଡୁ ଆପ୍ ମୁଁ କରିକି ଭିଡିଓ ଦେଇଦେବି ଡେଫିନେଟଲି ତମମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଇଟା ଶିଖିବ ତାର GUI ପ୍ଲସ୍ ତାର CUI ଦିଟାକ ବନେଇକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର ପେସେନ୍ସ ଆମେ ମିଟ୍ କରିବା ଭେରି ସୁନ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଡୁ ଦ ସେସନ୍ ତ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍କଶପ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବି ଆଇ ୱିଲ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଏନ୍ ଆଣ୍ଡ get some latest information from you. Yes. Thank you, sir. Chalo. Bye to all. Yes, sir. Good Bye. night. Good night. Sir. Sir. Thank you, sir. Yes, I'm closing the session. Bye.